Hello everyone, good evening. सभी को नमस्कार, जय हिंद. So we are into the last fifth session of science and technology, and today again I will be covering everything in bilingual mode. आज भी जो भी मैं बताऊंगा वो bilingual mode में होगा और आज जो भी टॉपिक्स कवर मैं करने जा रहा हूँ ये सब आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. So whatever we are going to cover, they all are really very relevant and you could expect questions in the examination. So I'm going to cover those kind of topics which are there in the news, whether the Hindu paper, Indian Express, whatever sources you follow. At the same time, I'm also going to cover certain basic things. तो मैं जो कुछ भी बताऊंगा उसके साथ कॉन्सेप्ट लिंक करते हुए एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा. तो मैं देखता हूँ कितने लोग अभी ज्वाइन कर गए. ठीक है, तो लेट मी सी हाउ मेनी पीपल हैव जॉइन्ड नाउ and then I'll get back to the topic. Okay, Pawan Sahu has joined. All right. So all right. So let us see here. I think many people have joined now, so I can start with the topic now. And before I go into this topic, let me just get into the areas here, right? Okay, good evening everyone. Right, again people who are joining right now. So just to brief you that today is the fifth session of the science and technology. और आज जो भी मैं एरिया कवर करूँगा वो सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे एग्जाम के लिए, तो वो सारी चीज़ों को मैं एक एक करके बताता चला जाऊंगा. आज भी बाइलिंगुअल मोड होगा, ठीक है, और उसमें सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे. तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक हैं, ठीक है, सही से पढ़ाई लिखाई चल रही है एंड मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू अपेयर इन द कमिंग एग्जाम. ठीक है, और जैसे मैं हर बार मैं ये बात बताया हूँ कि इट इज़ नॉट दैट ओनली यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम बट ऑल्सो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. बाकी जो भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैं वहां भी जो भी टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूँ उसके लिए भी रेलेवेंट है, इज ऑल्सो रेलेवेंट फ्रॉम देयर. अब आपके पास ये मौका है ना, दोज हु आर गोइंग टू अपेयर इन द एग्जाम, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मौका है, वो चीज़ है. तो वही कहते हैं ना, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं. राइट, तो समय बीत जाता है, टाइम will not wait for any man, and you have the opportunity that if you want to win in the race, you have the opportunity. If you can make best use of the time and win the race, right, that memory will always there. और अगर आप वो मौका गवा देते हैं तो वो भी आपकी याद रहेंगी, लेकिन वो अलग ढंग की यादें होंगी. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, you are trying your level best for the examination there. So anyway, I will start with the topic here, and let's go into the topic here. So I have given the heading here, new frontiers of science and technology, right? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए आयाम जो है, emerging areas and frontiers there. We will go into those kind of topics there, and again it will be interactive session, है ना. मैं सारी चीज़ों को बताता जाऊंगा, आप उसको आप मुझे रिप्लाई करेंगे. मैं आज भी लैपटॉप अपने सामने रखा हूं, मैं आई हैव लैपटॉप एंड आई एम लुकिंग एट योर चैट बॉक्स. तो वट एवर योर क्वेरीज आर देयर, आई विल जस्ट लुक इनटू द क्वेरीज इन द चैट बॉक्स एंड इन बिटवीन आई विल इंटरेक्ट विद यू. तो मैं समय समय पे आपके चैट बॉक्स के थ्रू आपके साथ इंटरेक्शन करता रहूंगा. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, है ना. लेट अस गो इनटू द टॉपिक वन बाय वन. सो आवर फर्स्ट टॉपिक दिस वन. What the image you are seeing that, right? And you can make it out here, right? Another aspect you can make it out there. You can see the hand gesture, DNA, right? All this visual what you can see there. So what we are talking about is a very important now, what is called extended reality. What is called as a extended reality, XR, right?
So let us go into this one. ये एक नई चीज जो इवॉल्व हो रहा है और 2024 एंड कमिंग इयर्स ये दिस विल बी वन ऑफ द very important part, extended reality. Now, when we come to extended reality, it basically has two aspects. One is called AR, augmented reality, और दूसरा जो उसका पार्ट है वो है VR, that's a virtual reality. It is basically a mix of these two technologies, AR and VR, right? Augmented reality and virtual reality. What is augmented reality? In augmented reality, we basically augment our day-to-day life experiences. So there is a, in terms of augmentation of real life, what we experience, our experience, जो हम अनुभव करते हैं, with images, text, voice, video, right? With the help of, right? यहाँ हम क्या करते हैं? With the help of computer or mobile apps. We use apps here, है ना? क्या हम करते हैं यहाँ पर? हम application का यूज करते हैं. We use some kind of application and then we try to superimpose जो हमारा जो भी हम देखते हैं, what we visualize either through computer or mobile phone, and with the help of the application we superimpose text, video, voice, images, graphics. That is called augmented reality. इसको AR कहते हैं. तो उसमें क्या होता है? You have application, ठीक है, in the mobile phone. तो when you take the camera, ठीक है, when you take photograph or video, or when you see something, and if you use that application will superimpose the graphics, है ना? जब आप कैमरे के थ्रू देखते हैं, मोबाइल ऐप के थ्रू, जो ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड होता है, AR होता है, तो वो चीजों को, यानी कि आप रियल लाइफ को चीजों को देख रहे हैं, आपके आसपास की जो चीजें हैं वो कैमरे के थ्रू दिख रहा है, बट एप्लीकेशन क्या करता है? उसमें नई चीजों को डाल देता है. यू हैव न्यू थिंग्स ऑन दैट वन. जैसे कि फॉर एग्जांपल मे बी सम ऑब्जेक्ट जो यहाँ नहीं है, जैसे मेरे सामने भी नहीं है, लेकिन वो वहां पर मुझे इस एप्लीकेशन के थ्रू वो दिखेगा, जो कि वहां पर नहीं है. तो मैं सारी चीजों को देख रहा हूं, मैं साथ में ऐप के थ्रू वो चीज को भी मुझे ये पूरे बैकग्राउंड में दिख रहा है. दैट इज व्हाट कॉल्ड AR, है ना? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ ऑगमेंटेड रियलिटी, कि हमको मुझे वो बैकग्राउंड, राइट, आई एम एबल टू सी. दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ दैट एप्लीकेशन आई एम एबल टू विजुअलाइज certain things which are not there in my background, but I am able to see through that application there. That is what is called AR. Now what is VR, virtual reality? So here this is basically outside real world experience, right? Here the person experience outside real world, although physically the person is here in the real world, but the person experience outside this experience, right? So here outside real world experience, right, what is something called immersive reality. The person is immersed, immersive experience. The person is immersed in that outside world thing there. Although the person is here,
आप इसी जगह पे हैं, यही पे फिजिकली प्रेजेंट है, लेकिन जो आप अनुभव करते हैं वो इस जगह का नहीं होता, रियल वर्ल्ड का नहीं होता है, कुछ और वर्ल्ड का होता है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल, है ना, आभासी बोलते हैं, हिंदी में कहा जाता है आभासी है ये जो यहाँ पर जो वास्तविकता है, एक्सपीरियंस। नाउ विद द हेल्प ऑफ राइट you have a headset, your VR headset is there, which one plays on the eyes there, so that headset, and there will be other devices. Let's say you want to drive a car, when you wear that headset you will see that you are inside a car and you have all the parts which you can operate, just like a normal driver will drive the car. So, but you will have that experience that you are riding a car and you are able to move left, right, system will move it, right, system will move it. वो आपको वही अनुभव देगा कि आप सच में कार चला रहे हैं, और इन रोपवे या एस्ट्रोनॉमी, you are in Mars, Jupiter, Moon, or you are in some other places there in an industrial setup and you are doing some kind of work, तो वो चीज एक्सपीरियंस होता है. You have a headset and here you have a headset and other devices. Headset and other devices, right, that give that kind of experience. That is what outside real world experience, immersive experience with the help of headset and other devices. So you have a VR set, you have a VR setup is there, which takes you to the other world. तो पहले ये समझना है कि what is AR, what is VR. Now we can combine them together. This could be combine them together in something called MR, mixed reality. Right? We can combine AR with VR in something called as a mixed reality. What is mixed reality? You are wearing a headset, VR set, you are having outside world experience, and at the same time in that outside world you are also having augmented reality. आप ऐसा समझो कि आपने VR सेट को पहना है तो आप दूसरी दुनिया में पहुंच गए, यानी कि आपका जो अनुभव है यहां का नहीं कहीं और का है, ठीक है. अब उसी वो जो आप देख रहे हो, आप वेर यू आर विजुअलाइजिंग विद वॉइस, साउंड, एवरीथिंग, जो कि यहां नहीं कहीं और है, अब उसी में कुछ इमेजेस, फोटोग्राफ्स, वीडियोस उसी बैकग्राउंड में, आप कल्पना कीजिए कि उसी बैकग्राउंड में जहां आप वीआर को यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल रियलिटी, जो उस दुनिया में आप पहुंच चुके हैं, you have reached to that world and you are experiencing that particular outside world, and there whatever you are seeing around you have again AR, augmented reality. That things again you find new type of graphics, images, videos superimposed, that is called mixed reality, MR. ठीक है. So when we come across extended reality, XR, what is XR? Let's look at this image. If you see this person's image, now this is VR set. This box what you see on the eyes, this is a VR set. This virtual reality set. And at the same time the person is able to operate. That means in this here nothing is there. But once the person has worn this VR set, is there in that seeing the entire thing there. And at the same time in the same one you have a DNA structure, you have something other aspect there. तो इसी बैकग्राउंड में जो एक्सपीरियंस किया जा रहा है वहीं पर बाकी सारे ऑब्जेक्ट भी दिख रहे हैं, मतलब उसी में ऑगमेंट हो चुका है. दिस इज कॉल्ड एक्सटेंडेड रियलिटी, राइट. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ एक्सटेंडेड रियलिटी. यस, एप्पल विजन प्रो MR, yes, they're very right. I'm looking at your chat box now. Famous in previous IPL, yes, VR headset, IPL match, yes. That means Geo,
right? Geo part of it. You are in that world. Let me demonstrate here. मैं आपको दिखाता हूं वहां पर कहां पर है. Just wait for some time. Okay, so I'll demonstrate right now. You will see right now the demonstration. This is the box. Everyone can see this. Everyone can see this VR set. This is geodive, right? So I'm going to demonstrate this thing here. So what I can do, I'm just opening the device here, right? This is what I have got the device. I'm opening the device here. You will be able to see here. This is the one. So let me just wear this device. Now this is the one I have worn. So what is happening here? In this world, I am experiencing the outside world. This is my VR set. This is from the Jio, Reliance, right? This is Reliance Jio. I have got this particular one. Now I am here. मैं तो यहीं पर हूं मैं कहीं गया नहीं हूं मैं. लेकिन जो मुझे मेरे सामने जो चीजें हैं वो अलग चीज है. I am in totally different world right now. Now what I can do with the voice, there will be voice, sound, सारी चीजें. अब मैं इसी बैकग्राउंड में I can augment some object. जो चीज जैसे मैं अगर I am on the moon, मैं चंद्रमा में हूं, तो जो मून में है मैं वहां पर हो सकता है किसी पर्सन को मैं ऑगमेंट कर दूं. मे बी आई एम इन द मून राइट नाउ. आई एम एक्सपीरियंसिंग द आई एम वॉकिंग ऑन द मून, राइट? सो आई एम वॉकिंग ऑन द मून. Now what I'll do, with the help of AR, there will be another person also walking on the moon, right? That person is also there in the same place where I am right now. And now let's say we are able to interact with each other. हम लोग आपस में अगर बात कर सकें, सारी चीजों को कर सकें, that is where this the handset will help me out there. ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है सबको? तो ये जो चीज है, दिस इज द न्यू जनरेशन विच हैज कम अप. दिस व्हाट इज द न्यू जनरेशन, इट हैज कम अप विद दैट, राइट? सो आई हैव बॉट फ्रॉम द मार्केट. ठीक है, मेरे पास सारी चीजें हैं. आई हैव अ ड्रोन विथ मी. मेरे पास ड्रोन भी है. आई हैव गॉट अ ड्रोन, राइट? डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स आई हैव गॉट देयर. सो ये चीज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि when you are looking to any technology, now this is reality. Extended reality is now a reality, right? And that could be the part of it there, right? Now a question is that will it affect the eyes? It will not affect the eyes. But if you use any technology, right? Technology has positive side also. Technology has a negative side also. ठीक है, हर टेक्नोलॉजी के अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं. तो यहां पर ये चीज है. तो ये जो पार्ट मैंने भी जो बताया है, दिस वन, राइट? व्हाट आई हैव गॉट दिस.
तो इसके इट हैज इट्स ओन काइंड ऑफ लूप होल्स, है ना. इफ यू लाइक लेट्स से मोबाइल फोन, आप मोबाइल फोन ज्यादा यूज करेंगे तब भी आपके आंख में प्रॉब्लम होगा. इट्स अ वेरी इरेशनल क्वेश्चन कि विल इट अफेक्ट माय आईज. Manish Kushwaha, your question is same as when we use any kind of mobile phone, computer, laptop, it has some of the negative impact, right? वो वहाँ पर होता है. So this is where a part of it which you need to be aware of it, right? This is from the Reliance company. ये already market में available है. You can buy this one. ठीक है? This is where you have a device there with everything here. Now this is a VR set, right? Which I've just demonstrated right now. This is where the VR set comes into that. Now in the same context, when you come to extended reality, XR, right? Extended reality, you will have a combination of not only virtual reality, but you will also have the part of augmented reality. And that is what the future will be there in the field of technology. है ना? टेक्नोलॉजी के फील्ड में वो एक तरह का रिवोल्यूशन होगा आने वाले टाइम में. ठीक है, तो ये पार्ट मैंने अभी डेमोन्स्ट्रेट किया है. यू विल बी एबल टू सी दैट, राइट? यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ थिंग देयर. So this is what comes here. You have virtual reality, but you are able to superimpose everything and able to understand the part of it. So it is both the combination of VR and AR. And now if you imagine with the help of AR and VR, right? If you are able to operate on the things. अब आप imagine करो कि augmented reality, right? You are first in the virtual reality. Let me make you understand. आप ऐसा समझो, आप you are using virtual reality VR, ठीक है? Within that you are using AR. यानी कि सबसे पहले आपने वर्चुअल रियलिटी के फॉर्म में आप आए, फिर देन यू आर यूजिंग ऑगमेंटेड रियलिटी, और दोनों का यूज हो रहा था. दैट मीन्स साइमल्टेनियसली यू आर यूजिंग मिक्स्ड रियलिटी. ये हो गया एमआर. व्हाट इज एमआर? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी एंड एआर, ऑगमेंटेड रियलिटी. आप वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी दोनों को एक साथ यूज कर रहे हो. दैट्स कॉल्ड मिक्स्ड रियलिटी. ठीक है, अब इसी में अगर इफ इन द सेम थिंग you are able to see the real thing inside and able to operate. That means if it brings real life thing there and you are able to operate and handle objects similar to real life. You are in virtual, remember that. You are in a virtual world, but you are working like a real life. जैसे हम रियल लाइफ में काम करते हैं, जो हमारे आसपास चीजें होती हैं, जो हम देखते हैं, अब आप समझो कि आप उसी तरह उस जगह पे हो, आप यू आर इन दैट वर्ल्ड. लेकिन आप वैसे ही कर रहे हो जैसे कि एक नॉर्मल आप काम करेंगे. सपोज अब इमेजिन करो आप कि आई एम राइट नाउ इन द क्लासरूम. ठीक है, तो चीजों को मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं. आई एम एबल टू इंटरेक्ट विद ऑल यू थ्रू द चैट बॉक्स. मैं लैपटॉप के थ्रू आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं एंड आई एम डूइंग ऑल द वर्क. आई कैन सी एवरीथिंग देयर. नाउ इमेजिन ये बैकग्राउंड नहीं हो. दिस इज नॉट द बैकग्राउंड. नाउ विद दिस सिस्टम एक्सटेंडेड रियलिटी, आई एम इन अ क्लासरूम. गो इनटू द क्लासरूम. मैं इस एक्सटेंडेड रियलिटी के थ्रू मैं क्लासरूम में हूं, और उसी क्लासरूम में ये आप सब हो. यहां पर यू ऑल हैव कम देयर. वहां पर डिजिटल बोर्ड है, क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, द वे आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, और द वे आई विल टीच इन अ फिजिकल क्लास. जब मैं वहां फिजिकल क्लास में आके जिस तरह से मैं नॉर्मल अपने लाइफ में बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैं वही चीज मैं यहां पर कर रहा हूं. आई विल डूइंग हियर as I am doing the normal thing. I am walking, I am talking, I am interacting with the people there, the students there. They all will be there. But only difference is that physically I am not there. Physically मैं वहां नहीं हूं.
लेकिन वही काम मैं कर रहा हूं जो मुझे एक क्लासरूम में करना चाहिए, मैं सही वही सेम काम कर रहा हूँ। मतलब मैं उसको ऑपरेट कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ, हैंडल कर रहा हूँ सारी चीजों को, कि यानी कि मेरे लिए ये क्लासरूम बन गया। तो जैसे क्लासरूम में मैं कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं उठाता हूं, मैं बताता हूं, मैं या मैं आई एम टेकिंग दिस, आई एम राइटिंग दिस वन, तो जो कुछ भी मैं नॉर्मल क्लासरूम में एज ए टीचर मैं करूंगा वही चीज मैं कर रहा हूं। बट अंतर यह है कि आई एम इन दैट वर्चुअल क्लासरूम विच इज नॉट रियल, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूं वो रियल लाइफ जैसा काम कर रहा हूं। ठीक है, मैं हूं क्लासरूम में, काम भी वैसा ही कर रहा हूं जो कि रियल क्लासरूम में करना चाहिए, लेकिन वो जो सेटअप है वो रियल नहीं है, वो वर्चुअल है। दैट इज व्हाट कॉल्ड एक्सटेंडेड रियलिटी। सो दिस with the part, this becomes a part of extended reality. This is what becomes the extended reality, right? इसका this has become the part of extended reality. एक सर, so whatever so I'm doing real world where in virtual world. Here I'm there in the virtual world, virtual setup में हूँ, but I am able to act, manage like a real world. So that experience XR gives, extended reality provide that kind of thing there. और इसके बहुत सारे applications हैं. I have been always saying that you have to always look at applications. कोई भी टेक्नोलॉजी का आपको एप्लीकेशन पे जाना है, और ऑलरेडी यूपीएससी asked the question on AR and VR, augmented reality, virtual reality पे क्वेश्चन आ चुका है. It's already asked in prelims exam. So now you have to look into the part of next level. What is next level? The virtual reality. Right? Can you give any one thing? Right? Can anyone tell me any such application which has come there? जो अभी आया हुआ है? Yes, very right, Pankaj Singh. IPL VR headset by Jio. The same thing is the one. What I've shown, right? ठीक है? Is it clear, everyone? I'm able to see all of you, right? In the part of this, I'm looking at downstairs because यहाँ कंप्यूटर है. अगर मेरी नजरें नीचे जा रही है तो मेरे सामने कंप्यूटर का स्क्रीन है, तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन में से देखता रहता हूँ ताकि मेरा वॉइस और साउंड जो है वहां पर दिख रहा हो. ठीक है, दैट्स व्हाट एंड आई एम लुकिंग एट द कैमरा. राइट नाउ इज द कैमरा. ठीक है, तो इज इट क्लियर हियर? ये पार्ट को जो है, तो ये पार्ट को ध्यान में रखना है. दिस इज व्हाट हैपेंस हियर. दिस इज व्हाट कॉल्ड एक्सटेंडेड रियलिटी, एक्सआर. यानी कि जो एक रियल वर्ल्ड का चीजें हैं, दैट मीन्स द पर्सन, ये जो पर्सन है using the extended reality has come into a world here. See, everything is there with people around here, like it may be a office setup, and the person using extended reality is able to discuss everything, talk to the people, right? Discuss everything, and can work the object. Just the moment, the way we touch any object and work with that, all the object will also be virtual, and that way it is worked there. This is what you call as a XR, extended reality. ठीक है, with the photograph I'm trying to just depict what exactly extended reality comes into that, right? Yes. Now what comes here, next one here, you are aware of this one, but before he comes to that, इसका एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है मेटावर्स. दिस व्हाट यू कैन सी इज अ मेटावर्स. यू ऑल नो मेटावर्स, राइट? मेटावर्स इज वन ऑफ द काइंड ऑफ एक्सटेंडेड रियलिटी. मेटावर्स बाय फेसबुक. Already it is in the market, right? Metaverse is already there in the market, which create this kind of communication. You can communicate, you can create your avatar, or you can create yourself in that virtual world and can do all the interaction part of it. ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना है. Already this kind of technology has come to the market, right?
VR was there, AR has come there, but at the same time, now it has come into extended reality. One good application is metaverse. So now if you look at the application part, so applications of this technology. So we can, day-to-day life, right? We can have this. Like for example, this one, video gaming, right? It can be in the field of education, right? Smart class, or we can say here, we can create this smart class with the students and everything, and we can discuss that. Even it could be in healthcare. Right? Let's say for example, training of surgeon. और मैंने क्लास में बताया था गगनयान मिशन, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, कैन बी इन स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी. For example, training of astronaut. Whereas Gaganyaan, you take any kind of thing. There we can use extended reality. Then coming to here, industry. Again, you have freedom there. So industrial application, again, particularly here, training and working on devices there, on machines and the devices. Let's say manufacturing industry there. There we can use it. Entertainment industry, like here. Right, in terms of better view, right? Whether it's a cricket match, IPL, or any kind of OTT or whatever you come across, all this can be done there, right? All this can be experienced in that kind through extended reality. So that means it can have hundreds of applications. इसके कई applications हो सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज को ध्यान में रखना है. You have to always and always remember that this could have several applications there. मेन चीज क्या है कि you have to understand the concept कि XR होता क्या है. जैसे मैंने एग्जांपल बताया मेटावर्स, even it could be for meeting discussion, even we can have for tourism, right? You can create that kind of environment that you are in the forest and you are seeing the tiger or different wildlife, plants, without being into the forest, but you are having the same experience of a forest and you are walking, experiencing the same aspect of a forest. That could be done. Archaeological site, monuments, that you can be experienced through that. So all those kind of things can be done through extended reality, which will be mix of both AR and VR, right? This becomes very, very important here. Yes, security research also there. Yes, one can go into this kind of here. Now let me go to the next topic here. Any guess? What is this technology all about? What you right now see that your mobile phone and this lady has pop-up. The lady has pop-up from the mobile phone. So I'm looking at your chat box there. ठीक है? आपके chat box में देख रहा हूँ. ये क्या चीज है बताओ? What technology it comes there? Anybody in the class? Yes. What technology I'm talking about? I'm looking at your chat box here, so that yes. Hologram. Good. Very good. Very good. Shell has given the answer. Manish, AI is all right, but it's basically this technology holography, right? So it is basically holography technology. What you see right now is a holography technology.
holograph. Then another area where you could get question in the exam. So holography, what is here? It provides a three-dimensional visual effect. Here, just like what we see in a normal way, it can provide that. You all have seen that hologram. So 3D visualization is there. What is another thing here? What is very important thing here? The use of laser. It uses laser. You know the laser light, right? Optical way laser. Light amplification by simulated emission or radiation. Highly focused beam of light. It uses laser technique, right? To create this holographic vision. That's where it plays an important role here. मैं इसका कुछ example देता हूँ. Let me give you example here. It has been already been depicted. Like here, for example, one thing which was used here, this is Netaji Subhash Chandra Bose, right? Netaji Subhash Chandra Bose statue. This was created, that was in India Gate there. Even, Prime Minister Narendra Modi, during his election campaign, last general election, पिछले बार जो लोकसभा इलेक्शन था, उसमें होलोग्राफी को यूज किया गया to be present there and then interact with the people there. Even the leaders can use such kind of technology there, right? So it uses the part of, this one example was that it created that hologram that created Netaji's statue there. Now you have a real statue. In that place, now you have a real statue. You have seen this in movies, Hollywood movies, Hollywood and all this kind of science fiction movies, where a person comes out, right, and able to say something or give a message like a Star Wars. If you have seen the series of Star Wars, right, or let's say Superman, those kind of movies, they have depicted this kind of technology there. But now it is a reality. It has now become a real life and it is already there in the market, right? So this holographic kind of vision which create this kind of there, and that is where the light and the laser becomes very, very important here. उसका उपयोग किया जाता है ना, जैसे यहाँ पर है virtual hologram वगैरह. Yes, Pankaj, you are very right. I can see the chat box there. There is virtual hologram there. Again, it can be used for meditation in medical field, for learning autonomy and architect in interior design. Yes, you are right. Shell has given that answer. Yes, you are very, very correct. Right. So इसके कई तरह application जो है, many application could be there. Now what is very important here, in this context here, holography television, TV. Holography TV here. This holography TV, this create three-dimensional view of whatever the videos we see there. Like it is almost like this one. This type of device, you'll find they're like this one. Kind of a glass kind of thing. And one can see inside the things here. Any kind of a thing, that means you will be seeing like a three-dimensional within that system there. And whatever the things which will be there, right, whether you talk about dinosaur, right, you will be able to see the dinosaur there, right,
This all will be looking like a real dinosaur walking. Do you have a system there? Holographic TV. You can see this. So, जो चीजें हैं normally happens there. Now if you see here, this is a holographic TV. Even it can be used for advertisement purpose. Here, BBC has created this one. TV Revolution, that simple. Then you can see holographic TV. So many things have been now created here. Right, that's what you find here. And if you can go to the images here, this one you can see. Look at this one. Human heart. In that TV, that is a not flat. Holographic TV is not flat. It's a three-dimensional. So you can see that heart, human heart, just like a 3D way. This is what you can see there. So that is again with the help of laser. Even for advertisement purpose, this kind of things can be put up, right? That is once I saw this holographic advertisement in Lucknow airport. मैं लखनऊ एयरपोर्ट में जब बोर्डिंग के टाइम पे वहीं पे दीवार पे ही होलोग्राफिक का वो इस तरह का विजन था और उसमें वो लेजर के थ्रू वो दिख रहा था वो सारी चीजें जो वो एडवर्टाइज जो प्रोडक्ट कर रहे थे दैट होलोग्राफिक एस्पेक्ट वाज देयर राइट होलोग्राफी हैज लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस देयर इट इज यूज्ड इन सिक्योरिटी आल्सो देयर राइट security aspect also holographic encoded messages encryption all this can be done through holography. It's also possible there, right? Like almost like this one. What you can see here, you can see this one. That means you see the device here. It creates the kind of a thing. That means in the air, the device pop out the kind of a visual thing, and you are able to see the entire thing in a three-dimensional way. Now it has become a reality. It has already come to the market. अब ये टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुका है. It has now become a reality part of it. What you can see here right now, right? And you can see here holographic TV photos. Then again, if you come across another thing here, look at here. You have that system, and that create like in advertisement. Here is for advertisement part. ये ad के लिए जो ad advertisement होता है वो ऐसे डिजाइन होगा. जब आप वो जाते हो तो आपको थ्री डायमेंशनल फॉर्म में दिखता है वो holographic aspect में. You are able to see that, right? You can see here this one. So all this one, whatever you come across, now the things are getting there. Now look at here. Through that system, you are able to see the three-dimensional view. Right? Now, where the holography can be used? Now another one you can see here. This one, Earth. You have a system, and within this system, this is holographic TV. You are able to visualize three-dimensional form of Earth. So another this innovation has come to the market, right? ये मार्केट में आ चुका है यहाँ पर. तो यहाँ पर जो चीजें हैं, ठीक है, और कहाँ पर है होलोग्राफिक टेलीविजन जो है. नाउ हियर अगेन होलोग्राफिक कम्युनिकेशन. See, today we use mobile phone. We have a video call through WhatsApp or something. We have a video call, and we are able to see through the mobile phone. Now imagine that you have in the mobile phone, that system is there. Normally we are having a video call. We are seeing the person and we are having discussion with the person there. Now imagine you have a mobile phone and the person comes up. You have a system there, and you are able to talk to the person. Almost like a real thing there. Now this holographic communication can find many application here, right? इसका अगर हम application की बात करें, it can be in the field of hospitality, right? In the field of hospitality, like customer care. Let's say, for example, in a hotel or somewhere, receptionist. The receptionist is a holographic form, and AI can be also used. What Manish has said,
we can use AI system there, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम वहां पर यूज कर सकते हैं, और वहां रिसेप्शनिस्ट जो है वो रियल नहीं है, AI जनरेटेड होलोग्राफिक है, दैट विजन कुड बी देयर, और वी कैन टेक दिस वन in terms of this meeting, any kind of office meeting, right? Any aspect of this could be there. Again, in terms of normal day-to-day life communication, there we can communicate there. तो होलोग्राम कैन बी यूज एज अ रेप्लिका. अभी समझो कि ये आपका रेप्लिका होगा, योर रेप्लिका देयर, एंड दैट रेप्लिका वॉट एवर यू आर एबल टू कम्युनिकेट, दैट इज हैपनिंग थ्रू योर रेप्लिका, एंड योर होलोग्राफिक सिस्टम इज यू हैव विच प्रेजेंट यू एज यू आर, एंड दैट थ्रू लाइट एंड लेजर यू आर एबल टू टॉक टू द पीपल एंड कम्युनिकेट विद देम. तो वो चीज यहां पर हो सकता है, और ये किया जा रहा है, इज ऑलरेडी बीइंग डन. आज से 20 साल पहले ये टेक्नोलॉजी इन्फेंसी में था, आज ये रियलिटी बन चुका है और आज इसका उपयोग वर्ल्ड वाइड हो रहा है, राइट? तो यहां पर ये चीज याद रखना है, होलोग्राफी के केस में ये चीज को याद रखना है, होलोग्राफिक एस्पेक्ट में कम्युनिकेशन वगैरह पार्ट जो है. तो ऑल दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज नाउ मेकिंग द पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस, शेल मिश्रा हैज गिवन द थिंग हियर. Transparent laptop was recently showed in a tech expo. There is a glass screen and it is a kind of use of holography technology and it can be used as a digital form. Yes, very true. Shell, you are very correct. ये सब अब मार्केट में आ रहे हैं. All these are coming to the market. Right? और उसका काफी सारे potential applications होंगे future based. जो मैंने बताया यहाँ पर ये चीज है. What you see right now. Right? ये जो आप देख रहे हो, now this is a real aspect, right? That could be done there. Security aspect, like here, holography can also be used in a security setup here. Security and defense. There also we can use it. Like here, encoded messages. Sent and received using hologram. That could be encrypted using encryption technology with the help of hologram. What is hologram? 3-dimension. That kind of thing, and which can be deciphered, decoded by the person who has that key. So even the security aspect, this becomes very important, right? तो ये सब सारी चीजें अब अपकमिंग एरियाज. तो आपको हमेशा ये समझना है कि टेक्नोलॉजी एंड द एप्लीकेशन पर, राइट? दैट्स व्हाट वी से न्यू फ्रंटियर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. और होलोग्राफी पे एंड होलोग्राम पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया हुआ है. आपको हमेशा याद रखना है कि जो एरिया यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, वो चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि वहां पर पोटेंशियल क्वेश्चन कुड बी देयर इन द कमिंग एग्जाम. दैट पार्ट यू हैव टू बी अवेयर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन हियर. एनी आइडिया व्हाट इज दिस टेक्नोलॉजी? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम. कैन एनीवन फिगर इट आउट व्हाट बेसिकली दिस फोटोग्राफ डिपिक्ट? इस फोटोग्राफ में क्या डिपिक्शन किया जा रहा है और ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? क्या कोई इसको बता सकता है? आई एम लुकिंग एट योर चैट बॉक्स. मैं आपके चैट बॉक्स को देख रहा हूँ. एनीबडी इन द क्लास जो अभी लाइव है, ठीक है, जो मुझे बता सकते हैं ये क्या चीज है? मैं आपके सिस्टम को मॉनिटर कर रहा हूँ अभी. यस, another upcoming area, another frontier in science and technology. Solar system? No. Lakshmi, solar system nahi hai. Pankaj has given the answer, optical communication. Good. Good, Pankaj. That is this basically
free space optical communication. Free space optical communication. First time free space optical communication was demonstrated in Andhra Pradesh. इंडिया में इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया. Now here, see normally जब हम communication की बात करते हैं, when we have a communication system there, we use this one. Optical fiber, right? You're aware of this optical fiber. Fiber optics. What happens? The light, when your light bounces and it follows the total internal reflection. It uses the total internal reflection TIR based on the refractive index, and within the fiber, the light which goes there it just moves. आज जो ब्रॉडबैंड होता है इंटरनेट, घर में आपने देखा होगा फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं, जो केबल होते हैं, केबल और लाइन वगैरह होते हैं. इवन ऐसे केबल लाइन वर्ल्ड वाइड स्प्रेड किया गया. WWW जो हम कहते हैं ना, वर्ल्ड वाइड वेब, पूरा वर्ल्ड वाइड उसका नेटवर्क है केबल का. इवन ऐसे ऑप्टिकल फाइबर्स एंड नेटवर्क है विच गोज अंडर द सी एंड ओशन में भी उसका कनेक्शन वहां पर आता. तो दिस इज व्हाट अंडरग्राउंड, जनरली दिस इज व्हाट वी यूज अंडरग्राउंड. और अंडर द सी वी ले डाउन दिस फाइबर देयर. कई बार हमें रिपेयर मेंटेनेंस करना होता है, वी हैव टू गो फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, है ना. कई बार टूट गया, कुछ खराब हो गया, हमें रिप्लेस करना होता है या उसको ठीक करना होता है. तो आज जो हमारा ब्रॉडबैंड एक होता है, केबल होता है, वायर्ड होता है, दैट मीन्स हियर वायर्ड सिस्टम जो होता है, वायर्ड नेटवर्क जो है. और एक जो दूसरा होता है वायरलेस होता है, वेयर वी से वाईफाई, वाई मैक्स, वाईफाई एंड वाई मैक्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग. We use radio waves with the router. We use routers which with radio waves we connect the device and use the internet. तो एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है वायर्ड विथ केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर. दूसरा होता है व्हेन यू टॉक अबाउट अनदर वन हियर, अनदर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, दैट्स व्हाट वी यूज हियर, राउटर्स. दैट इज अ डिवाइस, यू ऑल हैव सीन दिस डिवाइस. Right? So here we use radio wave. Radio wave communication. Like example, very good example comes Wi-Fi. Wireless fidelity. जो घरों में, ऑफिसेस में, बिल्डिंग्स पे हम यूज करते हैं. ठीक है. वही चीज लार्जर स्केल में होता है मोबाइल टावर्स. जब हम रोमिंग करते हैं, मोबाइल टावर्स आर देयर. You have seen those kind of mobile towers, right? So mobile towers, that network, again it sends the kind of radio waves there, and we use the long distance here. We use this for long distance. Wireless communication. अब जैसे कि वाई मैक्स, वाइड एरिया राइट इंटर ऑपरेटिव यूजिंग माइक्रोवेव एक्सेस, जहां पर वाई मैक्स टावर्स वगैरह भी होते हैं. तो जो वायरलेस सिस्टम होता है, मोबाइल सिस्टम, तो ये यूज होता है. और एक और सिस्टम क्या है, व्हाट इज अनदर सिस्टम हियर, एक और सिस्टम ये है वायर्ड नेटवर्क, वेयर वी यूज ऑप्टिकल फाइबर.
राइट। अब जो तीसरा इमर्जिंग एरिया है, थर्ड इमर्जिंग एरिया, one area is this one, wide network, right? Second area comes here, this one, this in terms of wireless, where you use the wireless communication. So when you say wireless communication, this is second one, ठीक है। अब जो तीसरा जो इमर्जिंग एरिया होता है वो है FSOS, फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। Light, see, light as a packets of energy, quanta, photon, can be used to transmit any signal or message. Like, you know, one thing, light fidelity, visible light communication, which can happen in the given short range. But now imagine if you think of long distance, let's say this one, the third part which comes here, which I would like to add here, जो यहां पर है, this one, free space optical, that means light, we are having this communication. Again, it is a wireless, remember that it is basically wireless, we don't use any wire, right? It's wireless, but again here use of light. There is use of light as the part of. So what you have here? You have one building here, you have a system here, you have another building here, again you have a system, right? This one building, building number one, and you have after a distance you have another building, you have another building here, and we use the light. We use here light, particularly what? Laser. To send and receive here, transmission of signal. ठीक है। free means in the air. Imagine on the top of the tower or a building, है ना, वहां पर ये सिस्टम डिवाइस यहाँ पर है, और with the help of light, laser, particularly laser, because laser can travel long distance, right? Coherent beam of light, the devices are able to communicate with each other, है ना, device will be able to communicate with each other. तो imagine करो कि ऐसे सिस्टम जो है, right, we have in a given area, geographical area, let's say hundreds of buildings having this kind of a in the space. Space means open air. We don't use any wire, we don't use any mobile tower, but with the help of light, the communication is possible there. अब इसी का एक और क्या तरीका हो सकता है, इसका और क्या एडवांसमेंट आ सकता है? उसका एक और एडवांसमेंट ये हो सकता है कि this same area, let's say this geographical area, है ना, where you have all these buildings, right? All these buildings, they are using this light. Right? यहां जो लाइट का उपयोग किया जा रहा है, जितने भी है, imagine that is the one area, let's say area where you have this kind of system there, and then you have another part here, satellite. And with the help of satellite, now far away area, now imagine we have another far away area, जहां पर we have another type of system there, and they are able to communicate each other. अब आप इमेजिन करो कि ऐसे सिस्टम फ्यूचर में बिल्ड किया जाए, राइट? दिस सिस्टम जो कि फ्यूचर में बिल्ड किया गया है, and it all happens with the light, not radio waves. इसमें रेडियो वेव का यूज नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ पर ये टावर्स के ऊपर है, सिस्टम्स हैं, समटाइम दे मे हैव सेंसर आल्सो देयर, एंड नाउ यू कैन इमेजिन दिस कम्युनिकेशन
Again we use the light here. Again the laser as a form of light. Light could be mode of communication. So now this is the second area, area number 2, maybe hundreds of kilometer away, है ना, ये जगह जो है 100 किलोमीटर या हजारों मील दूर होगा, लेकिन हम इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं. एक है जो लाइन ऑफ साइट. व्हाट इज लाइन ऑफ साइट? फ्रॉम बिल्डिंग टू बिल्डिंग, टावर टू टावर, द डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट. इवन यू हैव अ सेंसर्स, राइट, सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं, एंड देयर इट कैन कलेक्ट ऑल द इन्वायरमेंट डेटा, है ना. ऐसे सेंसर लगे हुए हैं जो कि इन्वायरमेंट डेटा को कलेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है लाइट के थ्रू, है ना. सेंसर्स वगैरह से इनबिल्ट किया गया है. और एट द सेम टाइम जो हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वो भी हम लाइट के थ्रू यूज करें. दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन. नाउ अनदर फ्रंटियर एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना. ये फ्रंटियर एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर हो सकता है, द न्यू एरिया which is emerging here. So this is what you can see here. If I take you to this diagram, you look at here. They have optical chip, right? They have a kind of a device. You can see a device. Can you see the device here? ये अब ये देखो, अब ये चीज है ना. They have optical chip and optical this one. This is a device. ये ऑप्टिकल डिवाइस जो हम इंस्टॉल कर सकते हैं. और इसमें क्या है, ये सारा जो पैनल है, दिस इज अ पैनल, राइट. दिस पैनल कैन ट्रांसमिट बीम. यू सी हियर ऑप्टिकल वायरलेस एफएसओ ट्रांसमीटर. ये जो है ट्रांसमीटर है, दिस इज द ट्रांसमीटर. ये ट्रांसमीटर क्या कर रहा है? लाइट. All this can be transmitted. Mobile phone, we can have mobile phone. This mobile phone, laptop, all this can transmit the signal. अब इसको ये जो पैनल है, this can filter the, है ना, जो diffuse light है उसको filter कर सकता है. And then what it can do, this one you can see, towers, buildings. अब जैसे ये tower है, there's a building is there. Now this building to building, right, building to building communication you have. Building to building communication there. Again you can see here, ये जो trees है, bunch of trees, they have a sensor and the device with the FSO device. So we can have environmental data. Again you can see here this one, Eiffel Tower. वहां से कम्युनिकेट किया जा रहा है, टॉल टावर. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग हियर? यू कैन सी हियर, ये एरिया है, यू सी वेरी क्लियरली दिस एरिया. एंड नाउ दे आर यूजिंग दिस सैटेलाइट, इज इंटीग्रेटेड विद सैटेलाइट सिस्टम. अगेन यू कैन सी एरोप्लेन, द एरोप्लेन which fly in the air, right? Even the part of this one, you can see here, you have a system here, deep space. Again you have a satellite. Again you have a satellite, low earth, and low earth orbit we have a satellite. All those kind of communication can be done. What you see right now, this is the communication system. तो पहला जो इमेज है वो डिवाइस है, सेकंड वही डिवाइस, बी इज अगेन द डिवाइस सिस्टम, हाउ द लाइट विल गेट फिल्टर्ड एंड यूज्ड. थर्ड इज द लोकल एरिया वेयर ओपन एयर, है ना, स्पेस में इस तरह के लाइट के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है. और ये लॉन्ग डिस्टेंस में विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन किया जा रहा है. तो ये अब फ्यूचर होगा, दिस विल बी द फ्यूचर, फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन. ये पिछले 5 से 6 साल न्यूज में है, अभी तक यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं आया. इट्स देयर इन द न्यूज, राइट. आंध्र प्रदेश हैज ऑलरेडी डन देयर, बट क्वेश्चन हैज नॉट बीन आस्क्ड. लेट्स लुक एट द हेडलाइन हियर. If you look at here, if I just take you to this one, I'm just doing the search so that you are aware of it then. Free space optical communication. And I'm writing here Andhra Pradesh. ठीक है, ये चीज आप देखो,
सर्विलेंस प्रोजेक्ट, ड्रोन प्रोजेक्ट, कैन यू सी हियर, ये आप देखो आप, PIB 2017, मैंने बोला कि काफी सालों से न्यूज में है. यू कैन सी हियर दिस वन, President of India in Andhra Pradesh. Now see, that time Sri Ramnath Kovind. Now what is given here? Andhra Pradesh, right, fiber grid, Andhra Pradesh surveillance project. I'll underline this one. That time 2017 when that time President of India, Mr. Ramnath Kovind, when he visited Andhra Pradesh to inaugurate number of projects. So if you see here this one, Andhra Pradesh fiber grid, Andhra Pradesh surveillance project, Andhra Pradesh drone project, and you can see here this free space optical communication or FOS system. When was it in news? 2017. 7 साल हो चुके हैं, 7 years हो चुके हैं. इस प्रोजेक्ट को वहां पे इनॉग्रेट किया गया था और ये कहां पर दिया हुआ है? PIB में, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में. That update is there. So if you see here this one, plug and play and all this. तो यहाँ पर ये चीज जो है, but I'm just trying to give you the idea here. This was in the news, and you can see it now. Study on free space optical communication. Then again, you can see here. All this you can see here. It was all in the news here, right? This all comes into that, right? Even let's say if I write here the Hindu, अगर हम लोग इसको the Hindu newspaper की काम सर्च करें यहाँ पर, right? The Hindu paper. तो the Hindu paper newspaper, that time the article ये आ चुका होगा. this चंद्रबाबू नायडू क्या दिया हुआ है? Let me read out the thing here. Another significant accomplishment was Google company, Google Incorporation, consent to bring all its technology to Andhra Pradesh, including the offer to roll out its cutting edge, see here, its cutting edge free space optical communication. Cutting edge. Free space optical communication for AP's fiber grid project, for which the California-based internet giant Google company already come forward to provide. This was in the news. अब ये सिस्टम को बहुत कम करंट अफेयर्स मटेरियल में पढ़ा जा रहा है. कई बार करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि ओनली 1 year करंट अफेयर्स. Even question can be asked even 5-6 years back also. So this is an emerging technology where one can get the question, है ना, जहां पे क्वेश्चन आ सकता है. तो ये चीज मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है. ये कॉन्सेप्ट समझाने का मेरा मेन मकसद यही है कि ये फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन होता क्या है. यू हैव दिस पार्ट जो मैंने अभी बताया कि नॉर्मल कम्युनिकेशन वायर्ड या वायरलेस होता है. एक तीसरा कम्युनिकेशन जो इमर्ज हो रहा है फ्री स्पेस ऑप्टिकल का हो रहा है, और यही कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये चीज समझाया. लाइट और लेजर could be the mode of communication. इसी का छोटा रूप है लाइफाई, लाइट फिडिलिटी, राइट, पार्ट ऑफ दैट. तो मैं आपके चैट बॉक्स देखता हूँ, कोई अगर डाउट वगैरह है आई कैन टेक दैट वन. सो ओके, यस, पंकज सिंह हैज गिवन दैट सोनम वांगचुक, लाइक कनेक्टिंग किड्स स्कूल इन ऑपोजिट साइड ऑफ माउंटेन. वेरी गुड पंकज, वेल डन. यू ऑल नो सोनम वांगचुक where Ladakh, right? सबको पता है लद्दाख में. Shell Mishra has given there. FSO users can include military. Yes, very very important. Military applications, security applications, because the speed of is very high. Light can carry the messages or signal very very fast. As compared to radio wave, it could be extremely fast, and at the same time secured. We can encode it. We can encode the message there. Large capacity aerospace communication, yes, very true. Shell, you're very correct. You're very correct that it can be used. Excellent. Good, very good. So Pankaj has already given. See here, तो पंकज ने जो बताया यहाँ पर ये चीज जो है लद्दाख, लेह लद्दाख.
So now look at here, this is a mountain. So two part of the mountain here. Sonam Wangchuk, an engineer, innovator. पंकज ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि लद्दाख दिस वन, सो फ्रॉम वन स्कूल, right, this one school to the another school across the mountain, right? And let's say suppose you have this system here. Suppose you have a system here. So what we can do, this one, and through here अगर आपको याद हो, मैंने क्लास में बताया था, in my previous video I have talked about China using the Mesius satellite, Mesius, which is named after ancient Chinese philosopher. चाइना ने भी ऑप्टिकल लाइट के थ्रू कम्युनिकेशन को डेमोन्स्ट्रेट किया है, और समथिंग कॉल्ड क्वेस, क्वांटम enabled space experiment. China has already done that. चीन ने ये काम करके दिखाया, सैटेलाइट के थ्रू इंक्रिप्टेड मैसेज को वन प्लेस से दूसरे प्लेस में मीसियस सैटेलाइट के थ्रू चाइना ने करके दिखाया. अब यहां पर एक चीज है, एग्जांपल है, तो यू नो दैट दिस वन वेरी गुड. Very good, Pankaj. You have given a very good example. Right? Very good example is there. Let's look at this example here. We write here Ladakh. Free space optical communication. Right? Sonam Wangchuk. आप देखो, वो हंगर स्ट्राइक दे रहा वो अलग है, राइट, फेमस साइंटिस्ट इन लद्दाख, तो वो अभी अलग चीज हो रहा है. अभी नाउ ही इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट, राइट, हंगर स्ट्राइक एंड ऑल, वो उस टाइम पे था. सोनम वांगचुक दिस पर्सन. अभी तो वो है कि वेयर सो दैट वाज वेयर ही इज हंगर स्ट्राइक टू डिमांड फॉर लद्दाख. आपको पता है, जो फिल्म आपने देखा होगा, 3 इडियट, फुनसुक वांगडू, आमिर खान कैरेक्टर, inspired from Mr. Sonam Wangchuk. He is now demanding for spacious status for Ladakh, right? Scheduled, जो है ना, 6 schedule जो होता है, उसके डिमांड कर रहे हैं. That's what comes here. Right? Shell has already given the answer here. Shell का जो यहाँ पर है, इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है कि we can have different type application here. What she is mentioning there. So again, this is what you can understand there. So even with the light here, light as a medium can be part of the communication here. And this is FSO device. You have FSO device here. Right? China has already covered, I have already mentioned that. Now, so if you look at application here, so we can have so many applications here. One is this one, like here, in case of this wireless communication in a geographical area. Now nowadays we are using radio wave, right, with mobile towers. So that means it can supplement, राइट, जो कन्वेंशनल हम जो नॉर्मल रेडियो वेव कम्युनिकेशन जो करते हैं विद मोबाइल टावर, that could be there. Then second, what could be there? Aerospace,
over a long distance, we can have this one, right? Aircraft. And what is very important is very fast. Here, this is extremely fast. It can have 224 gigabit per second. अगर हम ब्रॉडबैंड की बात करें, गीगाबिट पर सेकेंड स्पीड कुड बी देयर. नॉर्मली हमारा जो भी आज हम यूज करते हैं 4G, अब 5G आ गया है. 5G 10 गीगाबिट पर सेकेंड, 10 Gbps, वो आइडियल केस होता है. नॉर्मली 200 मेगाबिट पर सेकेंड, नॉर्मली जो हम करते हैं मेगाबिट पर सेकेंड Mbps में होता है. But imagine the light can be very fast. At the same time, quantum. Right, where we can use quantum. I have already discussed in the previous video about this quantum computing and quantum communication. Quantum communication, like here, this military application, secured. Again, that light as a mode of transmission of messages or signal, the messages can be encrypted. And that can be conveyed or communicated over a long distance, and again very fast, without getting hacked. Very fast it can be done. Fast mode of communication we can do it, है ना. हम उसको दूर तक कर सकते हैं, बॉर्डर एरिया के आसपास कर सकते हैं, हम सारी चीजों को उसमें कर सकते हैं. तो वो एक तरह क्वांटम. व्हाट इज क्वांटम? क्यूबिट, क्वांटम बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्यूबिट. Light can act the qubit, photons. Light is made of photons, and photons can act as quantum bits, qubit, following the quantum mechanical laws, superposition, entanglement, tunneling. That could be done, है ना. जो क्वांटम के लॉज हैं उसको वो क्यूबिट फॉलो करेगा. और यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? लाइट की बात कर रहे हैं, क्यूबिट, फोटोन्स की बात कर रहे हैं. और वो सिक्योर्ड गेटवे होगा, सिक्योरिटी सिस्टम में हम यूज करेंगे. चाइना इसका एग्जांपल है. जैसे I've given China has this project conducted, QS. What's the name of the project? QS, Quantum Enabled Space Science. This is going to be the future, kind of used in military system there. Enabled experiment in space. और आप सर्च करके देखो, इफ यू सर्च दिस क्वेस हियर, चाइना का जो क्वेस है यहाँ, चाइना क्वेस, यहाँ पे उन्होंने मिकियस, जो मैंने बताया मिसियस सैटेलाइट, ये चीज है, क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स एट स्पेस स्केल. एंड यू कैन सी हियर दिस वन इमेजेस, ये चीज है. 2 places, satellite, missiles. China did this. Again, it is a type of free space optical communication. It's an advancement of free space optical communication. बस इसमें केवल एक ही अंतर है कि यहाँ जो मैसेजेस है वो एनकोडेड है, हो रहा है वो लाइट के थ्रू ही. With the help of satellite, China what did with the light only, but only one added thing is that China used quantum communication, used quantum bits to send and receive the signal. मतलब आप फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन को आपने इनकोड कर दिया क्वांटम के थ्रू और उसको सिक्योर कर दिया सिस्टम को. That's what the upcoming area comes into that, right? Yes, Pankaj Singh has given there long distances communication for astronomical research and development. Yes, it can be done. ठीक है, तो that is what you can find here. तो ये एक न्यू फ्रंटियर है. आप समझो
ये एक बहुत नया फ्रंटियर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, और यूपीएससी के एग्जाम या कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां क्वेश्चन पूछा है उससे, राइट। तो उसको अच्छे से करना है वहां पर, ठीक है, ठीक है, यहाँ क्लियर है यहाँ पर सबको। तो मैं इसलिए सारी चीजों को समझाता जा रहा हूँ कि आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए और एप्लीकेशन पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो समझ में रखना चाहिए, ठीक है, यहाँ क्लियर है। तो ये चीज जो मैंने भी बताया यहाँ पर, ये सारी चीजों को समझना है यहाँ पर। एस्ट्रोनॉमी भी हम कर सकते हैं, राइट, जहां पर एक्सप्लोरेशन जो है, हम एक्सप्लोरेशन लाइट के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सैटेलाइट जो होता है ना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, दैट स्पेसक्राफ्ट लाइक हियर, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रोवर। जो रोवर होते हैं, रोवर को हम कंट्रोल कर सकते हैं लाइट के थ्रू, लेजर। अगर आपको याद हो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, प्रज्ञा रोवर, तो जब उसको विक्रम लैंडिंग कर रहे थे तो वहां हमने लेजर का यूज किया था कंट्रोल लैंडिंग के लिए। तो जो चंद्रयान 3 में जो सॉफ्ट लैंडिंग था उसको कंट्रोल किया जा रहा था लेजर बेस्ड जो है, और हम उसको कहां से कंट्रोल कर रहे थे, वी आर कमांडिंग दिस वन फ्रॉम अर्थ, ग्राउंड स्टेशन फ्रॉम अर्थ। इसरो जो है ISRO कर रहा था वहां पर। अब आप इमेजिन करो यहाँ पे कि इसी में जो है सेम थिंग हियर, इस सिस्टम में जो है दैट यू हैव दिस सिस्टम हियर, लेट्स से यू हैव मून, सपोज करो आप मून, और यहाँ पर जो जो सिस्टम है यहाँ पर, है ना, लेट्स से मून में जो रोवर है, दिस रोवर, एंड देन लेट्स से ऑर्बिटर, दिस ऑर्बिटर जो ऑर्बिट कर रहा है, एंड दैट इज कम्युनिकेटिंग विद द रोवर, right, and again that is using the light, laser beam. The rover which is moving there and the orbiter there, they are having the communication with each other, ठीक है। ऑर्बिटर घूम रहा है अपने ऑर्बिट पे, स्पेसक्राफ्ट, रोवर इज वर्किंग ऑन दैट, और रोवर इज कम्युनिकेटिंग ऑल द डेटा, ऑल जो रोवर का जो भी इंफॉर्मेशन है, ऑल दिस डेटा इज गेटिंग बैक टू द ऑर्बिटर, ठीक है। And this orbiter can send the data where? This can receive the data in the ground station on Earth. जो ग्राउंड स्टेशन ऑन अर्थ जो है, जैसे मान लो कि इसरो का सेंटर है या नासा का सेंटर है, नासा सेंटर, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जैक्सा, इसरो, चाइना का जो CSA है, जहां भी है, तो यहां पर ये जो कम्युनिकेशन है दैट इज विद द ऑर्बिटर, and the orbiter is working with the rover, and not only moon, Mars, planet Mars, मंगल ग्रह, जुपिटर, कहीं भी उसको हम कर सकते हैं, and the light could be mode of communication there, ये लार्जर स्केल पे हो सकता है, ठीक है, this could be done at the larger scale, right। मैं इसी में जैसे कि कई बार सैटेलाइट जो होते हैं, सब इमेजिन करो कि आपको सैटेलाइट मैं ड्रॉ कर रहा हूं, लेट्स से यू हैव अ सैटेलाइट हियर, और ये जो सैटेलाइट है, यू हैव सिस्टम ऑफ सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट, एंड दे कम्युनिकेट विद ईच अदर। यहां पे हम लाइट का यूज करते हैं, हियर अगेन वी यूज FSO। ये तीन जो स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट आपस में इसके अंदर सिस्टम है, एंड दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर विद फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, FSO, इसका आपस में कम्युनिकेशन हो। अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है फॉर द स्टडी ऑफ ग्रेविटेशनल वेव। अल्बर्ट आइंस्टाइन जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था ग्रेविटेशनल वेव, राइट, ग्रेविटेशनल वेव को
उसको हम डिटेक्ट करने के लिए लेजर के थ्रू, या लेजर 3 satellites in the outer space, and they are far away, and they use laser light, just like free space optical communication, to detect gravitational wave. What Albert Einstein said, general theory of relativity, when there is a change in space time continuum fabric, जब उसमें बदलाव होता है, बहुत तेजी से चेंजेस होते हैं, तो वहां एक तरह का वेव जनरेट होता है जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण तरंगे बोलते हैं. तो व्हेन देयर इज अ रैपिड चेंज इन स्पेस टाइम फैब्रिक, इट जनरेट ग्रेविटेशनल वेव दैट कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम. अब आप देखो यहां पर ये चीज है, दिस थिंग आई टेक यू हियर, यहां भी जो है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, राइट, gravity wave, you can say here gravity wave in space satellite system there. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये चीज है. NASA is also collaborating. Current affairs, see here, I'll mark here. पहले तो डेट, what is the date here? 25th January 2024. Very recently it was in the news. NASA and ESA, American Space Agency, NASA, and with European Space Agency. Now look at here, ESA will provide, European Space Agency will provide spacecraft. Spacecraft कौन बनाएगा? European Space Agency. And international team doing the development operation of. अब आप देखो यहाँ पर gravitational waves were predicted by Albert Einstein's general theory of relativity more than 100 years back, right? क्यों प्रोड्यूस होता है? Gravitational waves are produced by accelerating masses such as pair of black holes. समझो कि black hole, what is black hole? When the star has collapsed under its mass gravity, it has become so massive, it has a very, very strong gravitational pull. Imagine you have two black holes moving around, and there very strong, very powerful gravity is there. That changes the space time ripples, है ना. दो ब्लैक होल जो है, जहां पर इतना स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग गुरुत्वाकर्षण बल है, ब्लैक होल जो हो, और जब वो घूम रहा है आपस में या कहीं पर कोलैप्स हो जा रहा है, मर्ज हो जा रहा है, तो जो स्पेस टाइम में जो बदलाव होगा, चेंजेस, वहां जो ग्रेविटी वेव जो जनरेट हो रहा है उसकी खोज करना, जो कि कौन प्रेडिक्ट किया गया? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन. वेरी रिसेंट. तो ये जो सैटेलाइट्स होंगे, 3 सैटेलाइट्स होंगे, एंड दे विल यूज द लाइट. तो अगर ग्रेविटी वेव आ रहा है, इफ द ग्रेविटी वेव इज कमिंग, तो क्या होगा? देयर इज सम चेंज इन स्पेस एंड टाइम. जैसे होता है ना फैब्रिक, स्पेस एंड टाइम विल मूव, एंड दिस लेजर लाइट विल बी एबल टू प्रिडिक्ट द चेंज. अगर उनके आपस का लेंथ किलोमीटर, मतलब किलोमीटर अपार्ट है, अगर आपस के लेंथ में कुछ चेंज हुआ, तो इससे ये ग्रेविटेशनल वेव को पता लगाया जा सकता है. आप समझो जो LIGO किया गया था, यू नो LIGO, 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 LIGO जो था, LIGO जो है लेजर, यहां पे तो लेजर इंटरफेरेंस बोलते हैं, यूजिंग सुपरपोजिशन ऑफ लाइट, राइट, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटर. ये US में this experiment was carried out, right, जहां पे लेजर लाइट के हेल्प से इस ऑब्जर्वेटरी में ये पता लगाया गया ग्रेविटेशनल वेव का. collapse of 2 black holes, the gravity wave that was caused by this LIGO, this tunnel was made, LIGO जो था, and they used the laser beam of light
यहां पे डिटेक्टर था, बेस्ड ऑन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लेजर लाइट सुपरपोजिशन। तो जब ग्रेविटी वेव आने पे चेंज इन द पाथ लेंथ, उसके डिस्टेंस में चेंज हुआ था। ये ग्राउंड लेवल पे किया गया था, यूएस में किया गया था, लीगो, जिसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया साइंटिस्ट को। आफ्टर 100 years of Albert Einstein theory, which was conducted in the US, Caltech, California Institute of Technology, and those scientists behind this experiment got the Nobel Prize in Physics. उनको अवार्ड दिया गया। अब क्या किया जा रहा है स्पेस में, तो उसके लिए क्या है, लीजा, लीजा, लीजा। व्हाट इज दिस मिशन हियर, लीजा। अब यही चीज जो ग्राउंड में जो किया गया था, ग्राउंड बेस्ड था ये। Now what they are planning? Now they are planning with the space based. They are going for space based observatory. और ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, इसको कहते हैं लीजा कहा जाता है। राइट, इसको कहा जाता है लेजर इंटरफ्रेंस, right, this satellite, और इसी का एक एडवांस वर्जन है लीजा। इसी को यहां पर एक कहा था लीजा, इवॉल्व लीजा। व्हाट इज स्टैंड्स फॉर, इवॉल्व मतलब एडवांस्ड लीजा। इसमें 3 सैटेलाइट, दे आर गोइंग टू यूज 3 ट्रायंगुलर satellites kilometers apart and with a light, laser light, same as जो कि LIGO ground पे किया गया था। what they have done in the ground level, they'll use this 3 satellites and again the laser beam, they'll try to find out gravitational waves in the outer space. LISA, laser interference satellite system there, satellite array. And now they are going for advanced LISA, LISA, evolved LISA. Again see light, like a laser being a part of the light, has got this kind of new area. These are the frontiers. These are frontiers in the field of space and astronomy. में ये frontiers है ना, इसका frontiers वहां पर दिया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने भी समझाया यहाँ पर। ये जो चीज जो आप समझ रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो वहां पर यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है। अब सोचो फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के कितने डायमेंशंस हैं, हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर, है ना। और कहीं भी किसी फॉर्म में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑल दिस डायमेंशंस कुड बी आस्क्ड, राइट। मैं आपका चैट बॉक्स देख लेता हूं, लेट मी सी द चैट बॉक्स हियर। सो देयर इज अ स्टूडेंट कॉल्ड अंकित तिवारी। अंकित बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, फॉर योर प्रेज। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे वीडियोस मेरे खोजे ठीक है, तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। अभी तो आप मुझे लाइव अभी आप देख रहे हो। आप मुझे इन क्लास के बारे में आपसे जानकारी चाहिए। देखे आप वो आप डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हो, उसके लिए तो मुझसे मिलना पड़ेगा, राइट। और कितने सारे वीडियोस हैं, सारे वीडियोस की जानकारी के लिए तो ऐसे डायरेक्ट नहीं हो सकता, आपको मुझसे मिलके सारा कुछ करना होगा। समझना इतना आसान नहीं है। स्पेस एंड डिफेंस के लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। मेरे स्पेस एंड डिफेंस के लिए अभी जैसे अभी ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ भी है, आप यहाँ पर भी अगर आप जाएं तो अभी ये जो वीडियोस मैं कर रहा हूँ मैं लाइव करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसके भी ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर स्पेस और डिफेंस का मैंने करंट एस्पेक्ट किया है वहाँ पर। और भी जब आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो बहुत सारे और भी मेरे स्पेस और डिफेंस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मुझे अच्छा लगा अंकित से बातचीत करके, ऑलराइट। तो मैं फिर वापस आता हूँ। लीजा क्या याद रखना है, लीजा याद रखना है, लीगो का ये। तो यहाँ भी लाइट कम यूज कर रहे हैं, है ना। ये पार्ट क्लियर है सभी को? देन आई विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। सभी क्लियर है ये चीज?
Then I'll go to another frontier of science and technology. Yes, any doubt you have? No doubt? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर मैं नए एरिया पे जाऊंगा मैं। तो मैं अलग अलग डायमेंशंस को कवर कर रहा हूँ, है ना, स्पेस टेक्नोलॉजी के तौर पे जो अलग अलग डायमेंशंस है वो मैं आपको कवर कर रहा हूँ, ताकि ये आप प्रिपेयर्ड रहें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आप प्रिपेयर्ड रहें कि एनी क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम तो आपको पॉसिबली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो एनीवे मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, क्लियर है ये जो मैंने बताया कौन सा यहाँ पर है, लीजा इज अ कोलैबोरेशन ऑफ नासा एंड ईएसए टू सर्च फॉर ग्रेविटेशनल वेव इन आउटर स्पेस, राइट। आउटर स्पेस में सर्च करने के लिए वहां पर ये चीज पार्ट में लीजा बोला जो। एनीवे लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक हियर, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हीरा सदा के लिए, डायमंड फॉर एवर। और आपको पता है ब्लड डायमंड, ब्लड डायमंड, व्हाट इज ब्लड डायमंड? मेरे प्यारे बच्चों, ब्लड डायमंड क्या है? व्हाट इज ब्लड डायमंड? हीरा की मांग बढ़ रहा है ना, डायमंड की मांग वर्ल्ड वाइड है। एक मूवी भी है, देयर इज अ मूवी, हॉलीवुड मूवी ब्लड डायमंड पे फिल्म है। डायमंड जो है माइनिंग की जाती है, नेचुरल डायमंड है ना, उसमें अफ्रीका, और वहां पर पूरा का पूरा जो उसका नेटवर्क है ना, ब्लड मतलब वहां पर है किलिंग, वायलेंस, जो हीरे को निकाला जाता है ना, ऑलमोस्ट लाइक ए स्लेवरी। वो हीरे को खान से निकाल के पूरा बंधक बना के वहां पर लेबरर को डायमंड के माइन में किया जाता है, और फिर वही चीज जो है इलीगल वे से भी होता है, कई बार मार्केट में जाता है, डीलर्स एंड उसको बनाते हैं और बहुत ऊंचे कीमत पे बेचा जाता है, राइट। तो डायमंड जो है एज अ प्रीशियस फॉर्म इज ऑल डिमांडेड। आपको पता है अंग्रेजों ने भारत से कोहिनूर हीरा, राइट, कोहिनूर डायमंड। और नेचुरल डायमंड में नॉर्मली क्या होता है, लाइक ए ग्लास, ग्लिटर, स्पार्कल। लेकिन नेचुरल में जैसे कोहिनूर, कई बार तो ब्लू कलर, एमराल्ड कलर, हीरे के भी रंग होते हैं, कलर होता है। मुगल एज और जो राजा महाराजा के समय में क्राउन, मुकुट में हीरा हुआ करता था, है ना, एमराल्ड कलर, मैजेंटा कलर, ब्लू कलर, पूरा हीरो से सजाया जाता था। क्राउन यूज्ड टू बी देयर। और आज मॉडर्न टाइम में रिंग, हीरे की अंगूठी, विल यू मैरी मी, राइट, प्रपोजल जो होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने हीरे की अंगूठी दे दी, प्रपोजल पक्का, राइट। दैट्स व्हाट कम्स हियर। ज्वेलरी, आभूषण, राइट, ऑल दिस आर देयर। अब मुझे बताओ, डायमंड जो आता है, क्या वो बाजार में मिलता है वो सेम होता है? उसको तराशा जाता है, डायमंड कटिंग की जाती है, डायमंड को कट करते हैं, उसे अलग अलग एंगल में तराशा जाता है। द रॉ डायमंड, जो माइनिंग से रॉ डायमंड आता है, दैट अंडरगोस लॉट ऑफ चेंजेस, उसको फिनिशिंग की जाती है, अलग अलग उसके फेस काटे जाते हैं, उसके अलग अलग डिजाइन बनाए जाते हैं, उसके अलग अलग साइज होते हैं, एकदम छोटे कड़ा, स्मॉल पार्टिकल से लेकर बड़ा साइज तक का डायमंड होता है। ऑल दिस आर डन, राइट। एंड विच इज इंडियाज मार्केट फॉर डायमंड? भारत में डायमंड का बाजार कौन सा है? कौन बताएगा? आई एम लुकिंग एट योर चैट बॉक्स, कौन सा वैसे है? यस, यस, ताहिर जी, थैंक यू, राइट, थैंक यू।
आपने हीरे से तुलना की, थैंक यू फॉर दिस। हाँ, यस, एंगेजमेंट रिंग, यस। कहाँ पर, कौन सा जगह है इंडिया में जो डायमंड की सिटी के नाम से जाना जाता है? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। मैं गया हुआ था, राइट, लास्ट ईयर आई वॉज देयर। वहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था, एजुकेशन का कॉन्फ्रेंस था, एंड आई वॉज इन्वाइटेड एज अ वन ऑफ द स्पीकर। एक गेस्ट के तौर पे मुझे वहाँ इन्वाइट किया गया था उस एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में। तो मैं उस शहर में जा चुका हूँ और उस जगह के बहुत सारे बच्चे मुझसे पढ़ भी चुके हैं। तो विच प्लेस इज कॉल्ड डायमंड सिटी ऑफ इंडिया? सूरत, वेरी ट्रू मनीष, वेल डन। सूरत, सूरत इन गुजरात को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। पूरा वहां पर फैक्ट्रीज हैं डायमंड की। मैं सूरत गया हुआ था। अब जब मैं सूरत गया हुआ था, जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो आया, लैब ग्रोन डायमंड। क्या कहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है? लैब ग्रोन डायमंड, आर्टिफिशियल डायमंड। एक है नेचुरल डायमंड जो प्रकृति में पाया जाता है, विच वी डू द माइनिंग देयर, और दूसरा है इन द लैब वी कैन मेक आर्टिफिशियल डायमंड विच इज सेम एज natural diamond, which is same as natural diamond. We can grow in the lab, lab grown diamond, right? So this becomes a very important here. So what is now comes here, see if we talk about carbon, यहाँ वर्ड होता है एलोट्रोप। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कार्बन जो है, कार्बन के दो एलोट्रोप होते हैं, मतलब उसके मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म जो है, एलोट्रोपिक फॉर्म जो है। डायमंड कार्बन से बना होता है जो कि प्रेशर और टेम्परेचर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर बनता है। एक है ग्राफाइट जो कि सॉफ्ट फॉर्म में होता है। लेयर ऑफ कार्बन्स होते हैं, हेक्सागोनल रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेयर ऑफ कार्बन्स, और लेयर बाय लेयर, तो दैट इज कॉल्ड ग्राफाइट। और दूसरा जो हार्ड फॉर्म होता है, यू नो डायमंड, the hardest, right, hardest फॉर्म में होता है। यहां पर क्या होता है, यू हैव अ लेयर ऑफ कार्बन्स, है ना, यहाँ कार्बन के लेयर्स होते हैं, हेक्सागोनल लेयर्स होते हैं, जहां कार्बन एटम जो होते हैं दे आर कनेक्टेड टुगेदर, और ऐसे कई लेयर्स होते हैं। दिस इज ग्राफाइट। इसी ग्राफाइट से बनता है ग्राफीन, है ना। से अगर इसका लेयर निकाल दिया जाए, वेरी थिन अल्ट्रा थिन मटेरियल कॉल्ड ग्राफीन, जो कि नैनो मटेरियल्स है यूज होता है। और डायमंड में क्या होता है, डायमंड इफ यू लुक एट द डायमंड, राइट, ये जो डायमंड होते हैं हार्डेस्ट फॉर्म में होता है, राइट, मेड ऑफ कार्बन, अगेन मेड ऑफ कार्बन एटम्स। और वो स्पार्कल क्यों करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर लाइट अंदर चला गया, इट बाउंस बैक, डिफरेंट फेस ऑफ द जो कटिंग की जाती है उसके कारण क्या है, स्पार्कल करता है, ग्लिटर करता है। नाउ डायमंड जो हम बात करते हैं, डायमंड जो है, अब ये जो डायमंड है, अब इसकी क्या चीज यहां पर है, इसी डायमंड का अब जो रूप यहां पर है, एक है नेचुरल, नेचुरल डायमंड जो पाया जाता है, विच वी डू द माइनिंग हियर, को माइनिंग करके निकाला जाता है। और दूसरा जो है आर्टिफिशियल डायमंड है। नाउ व्हाट इज द टेक्नोलॉजी हियर, व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड हियर, इसको लैब ग्रोन जो होता है, वी कैन नाउ, द टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व्ड। जब मैं सूरत में गया हुआ था तो लैब ग्रोन डायमंड, है ना, उसके लिए जो विजिट था, लेकिन वो क्या है, वो वहां पर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, बाकी कोई भी चीज अलाउ नहीं करते, पूरा सिक्योर रखा जाता है। ये जो टेक्नोलॉजी है लैब ग्रोन डायमंड जो है, ठीक है, ये सूरत में, इंडिया में सूरत में इसको बनाया जा रहा है। इवन आपको पता है कि सूरत में जो माइनिंग करके डायमंड आता है तो उसको भी पूरा जो उसके जो तराशी होती है वो सूरत में किया जाता है। अब सूरत इन इंडिया लैब ग्रोन डायमंड बना रहा है। नाउ दिस इज द टेक्नोलॉजी,
दिस इज टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, यू कैन गेट क्वेश्चन इन द एग्जाम, राइट। तो ये टेक्नोलॉजी पार्ट है। और मैंने बताया कि ग्राफाइट से ही बनता है ग्राफीन, 2 डायमेंशनल फॉर्म ग्राफीन जो होते हैं वहां पर ये चीज है। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये पार्ट जो है, अगर हम नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड का कंपैरिजन करें, ठीक है, ये नेचुरल डायमंड है, तो केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, क्या होता है केमिकल कॉम्पोजिशन, कार्बन, डायमंड इज मेड ऑफ कार्बन, ये नेचुरल डायमंड की बात मैं कर रहा हूं। देन अगेन हार्डनेस 10 ऑन द मॉस स्केल बोलते हैं, MOSH मॉस स्केल कहा जाता है, जहां हार्डनेस को नापा जाता है, उसका मेजरमेंट करते हैं, 10 होता है। और क्यों ये लाइट स्पार्कल करता है, क्योंकि डायमंड के अंदर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्यों स्पार्कल होता है, TIR के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जब लाइट अंदर जाता है तो वहां पर जो उसके फेसेस होते हैं, जो तराशा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.417 टू 2.419, अप्रोक्सीमेटली 2.4 होता है, एंड ये नेचुरली पाया जाता है, नेचुरल डायमंड। नाउ लुक एट लैब ग्रोन डायमंड, दिस इज द लैब ग्रोन डायमंड, ये जो है लैब ग्रोन डायमंड, ये जो आप देख रहे हो लैब ग्रोन डायमंड। अगर इसको देखा जाए केमिकल कॉम्पोजिशन, ये भी कार्बन से है, जो नेचुरल डायमंड होता है कार्बन से बना होता है, ये भी चीज है। अगर इसके हार्डनेस की बात करें तो ये भी 10 ऑन द मॉस स्केल है, सेम एज नेचुरल डायमंड, नेचुरल डायमंड भी 10 है, लैब ग्रोन डायमंड भी 10 है। तीसरा यह चीज है, अगर हम इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो 2.417 टू 2.419, ये भी सेम है, नेचुरल डायमंड के भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 है ना, 17 टू 2.419 होता है, सेम यहां पर भी है। और ये नेचुरली पाया जाता है जिसके माइनिंग करते हैं, और ये जो है लैब में क्रिएटेड इन द लैब। कहने का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एवरीथिंग इज सेम एज नेचुरल डायमंड। लैब ग्रोन डायमंड हैज दिस ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ नेचुरल डायमंड। आप फर्क नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करना मुश्किल होगा लैब ग्रोन डायमंड। अब ये सवाल उठता है कि लैब में बनाया कैसे जाता है, हाउ दिस डायमंड इज मेड इन द लैब, what type of technology they use it, ठीक है। when question will come in the UPSC exam, you have to not only know that lab grown diamond and these are the properties of the diamond, but you have to also know the what scientific principle or what scientific technique is used to develop this kind of lab grown diamond, which is ditto same to same as a natural diamond। तो आपको वो चीज पता होना बहुत जरूरी है ना। तो यहां पर जो है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज होता है, नैनो टेक्नोलॉजी कम्स इनटू एप्लीकेशन। या कार्बन वेपर डिपोजिशन, इट यूज अ टेक्निक कॉल्ड, मैं लिख देता हूं यहां पर, कार्बन वेपर डिपोजिशन किया जाता है। उसके लिए डिवाइस होता है, CVD बोलते हैं। लैब में कार्बन वेपर डिपॉजिट सिस्टम होता है जहां पर कार्बन वेपर, कार्बन एटम्स के होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज है ये, एंड दैट डिपॉजिट द कार्बन एटम एंड देन सेम काइंड ऑफ अ कंडीशन, केमिकल एंड फिजिकल फॉर्म, उस डायमंड को बनाया जाता है। इज अ वेरी वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी, इसलिए मैंने आज के टॉपिक का नाम क्या रखा है, फ्रंटियर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक नया फ्रंटियर है। इससे क्या होगा कि ब्लड डायमंड कम होगा, क्योंकि डायमंड एक समय माइनिंग के, जब हम पूरे डायमंड को माइन आउट कर लेंगे, अर्थ के क्रस्ट से जो भी डायमंड्स को हम निकाल देंगे वर्ल्ड वाइड, तो फिर खत्म हो जाएगा। और डायमंड के लिए चोरियां होती है, डायमंड के लिए डकैतियां होती है, डायमंड के लोग एक दूसरे का खून कर देते हैं। तो डायमंड के लिए, डायमंड का जो इतिहास है ना, खूनी भरा इतिहास रहा है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक रास्ता निकाल दिया है जहां हम सेम टू सेम जो प्राकृतिक तौर पे पाए जाने वाला डायमंड है उसको हम बना सकते हैं, वी कैन मेक इट। एंड अगेन इट हैज अ लॉट ऑफ मार्केटेबिलिटी, मार्केट प्रेजेंस, मार्केट यूज, दैट इज अगेन द वेरी हाई, वहां पर ये चीज है। नाउ लेट्स लुक एट द टेक्नोलॉजी हियर, क्या टेक्नोलॉजी है दिस वन। नाउ लेट मी एक्सप्लेन हाउ द लैब ग्रोन डायमंड इज मेड।
किस तरह से बनाया जाता है मैं इसको समझाता हूं। यहां पे क्या करते हैं, लैब में सीड होता है, कार्बन सीड यूज करते हैं, डायमंड सीड होता है, बीज जो बोलते हैं सीड, कोटेड इन प्योर कार्बन होता है, ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन से सीड होते हैं, छोटे सीड होते हैं, कोट किया जाता है, उसको सील करते हैं, इनसाइड अ स्पेशल चेंबर होता है, एक स्पेशल चेंबर होता है दैट मिमिक द कंडीशन इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। प्राकृतिक तौर पे डायमंड कैसे बनता है, प्राकृतिक तौर पे जो अर्थ के अंदर जो क्रस्ट है वहां डायमंड बनता है, वहां पर कार्बन होता है, कार्बन का कोई सी जो फॉर्म होता है, और अंडर वेरी वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर दैट बिकम्स अ डायमंड। अब आप इमेजिन करो कि यू हैव ए चेंबर, उस चेंबर के में कार्बन सीड होता है, उसको रखा जाता है, और उस चेंबर के अंदर जो पृथ्वी के नीचे अर्थ क्रस्ट में, पृथ्वी के क्रस्ट में जो हाई प्रेशर होता है, प्रेशर और जो टेम्परेचर होता है, वो चीज प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे प्राकृतिक रूप में डायमंड बनता है, सेम चीज को मिमिक किया जाता है लैब में, ठीक है। I'll make it understand in English also, those who are from English medium background. So what they do in the lab, they have a special chamber where they keep a carbon seed, and then they use the same amount of pressure and temperature which is naturally existing inside the earth crust, which form the diamond. The pressure and temperature what is required to form diamond in the earth crust, same environment, same kind of pressure and temperature is in that chamber in the lab, where that carbon seed is put into that same kind of conditions what naturally exist, and that form the diamond, same as natural process that is mimicked in the chamber in the lab. I hope that you are able to understand, right? तो यहां पर ये चीज होता है। अब यहां पर क्या होता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, HPHT, and this diamond is formed. एक मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या होता है, दिस इज अनदर वन, CVD, chemical vapor deposition. Another they use this one, chemical vapor deposition. They deposit the vapor of carbon layer by layer, and then that makes the diamond. ठीक है। तो lab grown diamond either take the seed of the carbon and put same pressure temperature and allow that diamond to grow, or another thing is that we use the same seed and we use this nanotechnology, chemical vapor, carbon vapor deposition, and then temperature pressure we create this diamond, we make this diamond. ये ऐसा सिस्टम होता है, it is not there but system there, ठीक है। समझ में आ रहा है, are you able to understand here? रेड होता है, उसमें कुछ इंप्योरिटी के कारण मोहम्मद ताहिर खान जो है वो ये पूछ रहे हैं कि उसका कलर रेड कैसे होता है, रेड या ग्रीन या ब्लू कलर कैसे होता है। जब नेचुरल प्रोसेस में, जब नेचुरल अर्थ के अंदर जब डायमंड बन रहा होता है, अगर उसमें कोई इंप्योरिटी लाइक मेटालिक ओर, कोई मेटल या कोई इंप्योरिटी आ जाता है तो उससे कलर वो डेवलप होता है। वैसे लैब ग्रोन डायमंड में अगर हमें कलर डायमंड बनाना है तो हम यहाँ पर केमिकल वेपर डिपोजिशन में कुछ ऐसे केमिकल या ऐसे इंप्योरिटी डाल सकते हैं, कुछ मेटालिक वगैरह, जो कि उसको कलर इंपार्ट करता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, एमरल्ड, दैट कलर कैन बी डेवलप्ड, राइट। तो दैट नेचुरल प्रोसेस होता है बिकॉज ऑफ इंप्योरिटीज। अर्थ के क्रस्ट में जैसे आपको पता है, आपने पढ़ा होगा मेटलर्जी में कि जो मिनरल्स होते हैं, ओर, जैसे हेमेटाइट, बॉक्साइट, जितने ओर्स होते हैं उसमें केमिकल इंप्योरिटीज होते हैं, तो वही इंप्योरिटी कारण उसमें कलर होता है, right? The color is because of that presence of impurities in the earth crust, that is some type of chemicals that impart the color to the natural form of diamond. Now in the same thing, when we want to develop in the lab the colored diamonds, so what we can do, we can add certain chemicals or some kind of impurities
that will develop the color in the lab grown diamonds. Same as what happens in nature. We can do that. Right? Yes, most welcome, Tahir. So this is where it comes here. So it could be a very important topic. That's what I've explained right now. Now let me go to another topic here. This one, Hyperloop. Another very important topic for the exam is Hyperloop. Hyperloop technology. Right? And you know Elon Musk. Now many companies have come. One is this Elon Musk. Right? Elon Musk, right? Hyperloop 1. But there are other companies have also come up for the Hyperloop technology. Now this is another frontier of science and technology. ये नया डेवलपमेंट है और अभी सैन फ्रांसिस्को टू कैलिफोर्निया वहाँ बनाया जा रहा है ना. इवन सऊदी अरेबिया में भी प्रपोजल है वहाँ बिल्ड करने का. इंडिया में प्रपोजल था पुणे टू मुंबई को हाइपरलूप से जोड़ने के लिए, लेकिन वो प्रोजेक्ट मटेरियलाइज नहीं हो पाया. देयर वाज अ प्रपोजल टू बिल्ड हाइपरलूप बिटवीन पुणे एंड मुंबई इन इंडिया, बट वो दैट इज नॉट बीन so much finalized. But if you go to Gulf countries, they are going for that. Europe is going for that. USA is going for this Hyperloop technology. Now, number of startups have come up in Hyperloop technology. Right? So here, what you see the design. See, this is basically a kind of a pod. What you see here, this is a kind of a pod, passenger pod. Let me write here. What you see right now, this is where the passengers can stay there. Passenger pod is there. So the people will be seated inside. They're seated inside this passenger pod. And then you have a track here. See, if you see here, there's no wheel. Right? There's no wheel. It is a highly magnetized. It uses superconducting magnets to generate magnetic force. जैसे बुलेट ट्रेन में होता है, मैग्नेटिक लेविटेशन होता है, तो वहां पर ये चीज है. अब यहां पर जो है, ये जो ट्रैक है, it basically float on the track, just like a bullet train which float on the track. Right? Now you have this one, elevated corridor. जैसे मेट्रो में होता है, is on the road here. This is a right bridge, or you can say corridor. Elevated corridor होता है. Same as metro. आपने देखा मेट्रो के लिए जो रोड के ऊपर हम जो बनाते हैं, same as the same thing is there, right? And it basically move with very very high velocity. Super fast speed, almost same as aeroplane, speed of an aeroplane. और इसमें ये होता है कि इसके अंदर टनल होते हैं, आइदर वैक्यूम और सेमी वैक्यूम. जब मेट्रो या बुलेट ट्रेन चलता है तो एयर इज देयर, एटमॉस्फेयर इज देयर, एंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एनर्जी इज लॉस्ट. यहां पर क्या होता है, ट्यूब होता है. There's a tube. Inside the tube it moves, and that tube, there's no air or negligible air, semi vacuum or vacuum. So there's no friction because of the air inside the tube. So this moves inside a tube here. इस तरह का यहाँ पर ट्यूब होता है. Imagine that there's a tube is there, and within the tube this hyperloop moves. What is a semi vacuum? Here, ये either will be semi vacuum or vacuum होते हैं. Tube is present. जहां वो high speed में move करता है. This is what the concept is there. Right? This is what you can see here. Hyperloop concept comes into that. And you can see here, this is another one. But let's look at here. So let's look into that. So if you look at high speed, right, transport system.
high speed transport system, right? The different modes are there. See, one thing which comes here, you are aware, bullet train. Like, you know, China, Japan, Europe. Now, you know, India. In India, you are aware, the first bullet train project is from Ahmedabad to Mumbai. That is under full-fledged construction. This project is there, which will join Gujarat and Maharashtra. Now here, when you talk about this kind of project, the bullet trains, the speed is very high. Speed goes to, right, this, it can go up to 500 kilometers per hour. You can move with that speed. And what is the concept here? इसको मैगलेव बोलते हैं. Magnetic levitation. That means, the train, there is a track there, the train float on the track. So it provides this kind of a magnetic force. It provides that force, this magnetic wave. So it uses superconducting magnets. What is used here? It uses superconducting magnets. Superconductors are used, and that generate this force. Strong magnetic force is generated. That is on the track, it happens there. Now what comes the next one here? Hyperloop. Now if you look at Hyperloop technology, as I said here, one is the first USA, San Francisco to California. Then again, Dubai, the Saudi Arabia and Dubai and all these Gulf countries, they are proposing for this one. Even Dubai, you know, Dubai and all this going for this technology. Then again, even Europe also they have proposed on this, and there was a proposal for India also there, right? Now in India there was a proposal of this one, but that is not materialized. पुणे टू मुंबई, ये हिंदू पेपर वगैरह में कवर किया गया था न्यूज में. अभी जो बन रहा है यूएस में बन रहा है सैन फ्रांसिस्को का. और अगर हम यहाँ स्पीड की बात करें, if we talk about speed here, it can go up to 800 to 1000, like here 800 to 1200 kilometer per hour. Speed of aeroplane 800, 900, 1000 kilometer per hour to 10 kilometer per hour. अब यहाँ पर जो क्या कॉन्सेप्ट है, here again maglev is the concept here, right? Again it uses magnetic levitation. Again the concept is same. It uses the part of superconducting magnets to generate that magnetic force. But difference क्या है कि यहाँ air का presence नहीं होता है. So what is here? Maglev system here, again without wheel on the track with this passenger pod, जो system होता है pod, moving inside. It move inside a, which I mentioned here, either semi or fully vacuum or vacuum tube raised over the ground. Just like a metro, you have raised over the ground. Even bullet train also, they are raised over the ground. तो उसको जो सिस्टम होता है
तो वहां पर ये चीज होता है, यानी कहने का मतलब ये सिस्टम है। यहां पे ये सिस्टम बना हुआ है, एंड देन दिस हाइपरलूप, इट मूव्स ऑन दिस, वो ट्यूब के अंदर मूव करता है, right? You can say hyperloop is basically an extension of bullet train with only two difference. One is the speed, and second, there is no air inside in the tube. Where will be air? Air will be inside the vehicle. उस गाड़ी के अंदर या जो व्हीकल है, जो पोर्ट है जहां पैसेंजर बैठते हैं, वहां एयर होगा, लेकिन जो बाहर जो ट्यूब है वहां पे एयर नहीं होगा। तो ये चीज का कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट कम्स इनटू दिस, राइट? हियर यू विल फाइंड इन दैट। और आप देखो यहाँ पे कई सारे चीजों को हमें डेवलप किया गया। इफ आई गो टू द हाइपरलूप हियर, इसको डेमोन्स्ट्रेट भी किया गया था, पीपल हैव ट्रेवल्ड इन हाइपरलूप, दिस ऑलरेडी हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, राइट? हाइपरलूप को जो है डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, सी द इमेजेस हियर, ये ऑलरेडी हो चुका है। तो फ्यूचर में it will come in India also there, right? You can see here this is a tube. इंडिया में भी प्रपोजल था हाइपरलूप का, which I said. Now look at here this one. Now again this, इसको कैंसिल कर दिया गया है because of high price and all this one. See here, even you know Virgin Atlantic, you know Richard Branson, another guy is Richard Branson. See, remember that Elon Musk, as a tech entrepreneur, he is investing into many such frontier technologies there. There's another guy, Richard Branson, who runs an airline called Virgin Atlantis. He is also investing to different type of startups there. Now, Elon Musk is also there in the space technology, SpaceX. Richard Branson has also gone into space technology called Virgin Galactic. So both are almost competing each other, but both of them are private people, private companies, private startups. These are future technology what you come across, right? So this is where things are now moving there. So I'll do one thing. I'll take the last topic here. That is in space technology. Again, both the companies comes into this. Another very landmark thing will be in future. Space elevator. What you see in the diagram here, space elevator. एक बड़ा इंटरेस्टिंग गाना है, अदनान सामी, अमिताभ बच्चन, मौला लिफ्ट करा दे, राइट? लिफ्ट करा दे, ऐसे वैसों को देखा है, तैसे वैसे को देखा है, मौला लिफ्ट करा दे, लिफ्ट। Imagine future, you know, lift, space lift, which can take human from the surface of the earth to the outer space. क्या मजा आएगा वहां, इमेजिन करो। वहां जाने के बाद when we see the bottom, ये जमीन जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो जो बोलते हैं ना जन्नत, हेवन, वन कैन हैव दैट। एक और गाना है, ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है हमें, राइट? ये कौन सी फिल्म की गाना है पता है? एनीबडी कैन गेस विच फिल्म सॉन्ग इज दैट? This is from old movie, right? Where Dharmendra and Hema Malini were acting. And it's a historical movie.
मैं आपको हिंट दे रहा हूं, मैं हिस्टोरिकल मूवी है वहां पर। अब इमेजिन करो कौन सी मूवी है, रजिया सुल्तान। व्हाट इज द नेम ऑफ द मूवी? रजिया सुल्तान। आपको पता है रजिया सुल्तान के बारे में? कौन बताएगा रजिया सुल्तान के बारे में? रजिया सुल्तान कौन थी? यू आर अवेयर, हिस्ट्री में दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत है ना। उस फिल्म में हेमा मालिनी इज रजिया सुल्तान एंड धर्मेंद्र इज द स्लेव, स्लेव डायनेस्टी। उस पर बेस्ड फिल्म है वो, प्रेम गाथा, रजिया सुल्तान और वहां पर जो है, उसी में ये गाना है, ये जमी हमें चांद से बेहतर नजर आती है। ये अनुभव होगा जब हम ऊपर जाएंगे और ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो ये धरती है ना, हमें जो धरती दिखेगा, क्या पता इंसान जिस तरह से अपने आप को विकास कर रहा है, ये धरती बदल रही है। क्या पता अरबों रुपया खर्च करके ये स्पेस एलिवेटर बनाया जाए और जब हम ऊपर जाके नीचे देखें तो हमें देखकर बहुत दुख हो कि हमने क्या कर दिया। ये जो हमारा प्रकृति, जो नेचर, महासागर, समुद्र से लेकर जितना हमने क्या कर दिया, उसमें भी मुझे एक गाना याद आता है उसमें मुझे एक सॉन्ग याद आता है, देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ना बदला सूरज ना चांद, बदल गया इंसान। देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ना बदला सूरज ना चांद, कितना बदल गया इंसान। ये चीज भी याद आएगा कि हम ऊपर जाके जब नीचे देखें तो हमें ऐसा ना महसूस हो कि हमने पृथ्वी के साथ क्या किया, व्हाट वी हैव डन विद आवर अर्थ, व्हाट वी हैव डन विद आवर मेजर आवर मदर नेचर। ये भी चीज है, बट एक है ना अनुभव, चाहे वो जैसा भी अनुभव हो, इंसान चाहता है कि वो एक दिन है ना जाए। और ये सपना, ये ड्रीम जो है, सपना मानव जो है आदि समय से करता रहा है। आदि समय से जब इंसान आसमान को देखता रहा है, तारों को, सूर्य को, चांद को, जो ग्रहों को देखते हुए इंसान है ना हजारों वर्षों से ये हमेशा सोचता रहा है कि ये क्या चीज है। और आज हम 21वीं सदी में, वी आर इन 21st सेंचुरी, राइट, वी आर नाउ इन 21st सेंचुरी। आज विज्ञान, आज टेक्नोलॉजी इस चरम पे पहुंच चुका है कि वो जो इंसान, जो इंसान, आदि मानव जो देखा करता था कि ये क्या चीज है, और आज भी जो इंसान देखता है ना, अकल्पनिक लगता है कि सूर्य, चांद, सितारे, ग्रह जो है, आने वाले 100 सालों में इंसान वहां पहुंचेगा, मानव की पहुंच वहां होगी। वो जो सपना जो है वो हकीकत में बदलने वाला है। ये बहुत बड़ी बात होगी, ये होने वाला है। दिस इज गोइंग टू हैपन। स्पेस टूरिज्म, अंतरिक्ष पर्यटन में बहुत सारे काम हो रहे हैं। लॉट ऑफ वर्क इज गोइंग डन, राइट। स्पेस टूरिज्म इज द sunrise industry, and that man's dream of getting to the outer space is going to become a reality in future. यही तो होता है, सपने बिकते हैं, सपनों को बेचा भी जाता है। आपको पता है आज जो बाजार है सपनों का बाजार है कि नहीं? आप मेरी बात को मानोगे कि आज जो बाजार है सपनों का बाजार है। हम सपना देखते हैं कि हमारे जीवन संगिनी कैसे होंगे, शादियां जो होते हैं,
ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस सपने को साकार करने के लिए बाजार में तमाम तरह के वस्तुएं हैं कि दूल्हे के लिए है ना कपड़ा, दुल्हन के लिए कपड़ा, बारातियों के लिए कपड़ा, और कई तरह ऐसे ब्रांड उसको इमोशनल तरह से बेचता है बाजार में। ठीक है, ज्वेलरी, आभूषण, कल्याण ज्वेलर्स, मलाबार गोल्ड जितना है, डायमंड की मैंने बात की, डायमंड, हीरे की बात की मैंने तो हीरे की जो चीजें होती हैं, सपना बेचा जाता है। गाड़ी चाहिए, एक आम आदमी को कार चाहिए, अपने परिवार को, छोटे परिवार को है ना एक देखने के लिए कार का सपना होता है, कार बिकता है बाजार में, गाड़ियां बिकती है, अलग अलग ब्रांड के जो कार कंपनीज होते हैं अलग अलग तरह से अपने ग्राहकों को लुभाता है। सपने का बाजार है, इज ऑल अबाउट मार्केट बेस्ड ऑन ड्रीम्स, है ना। कोई भी चीज कॉमोडिटीज हम करते हैं, सपने के बाजार में एक और सपने का बाजार है यूपीएससी कोचिंग। आप सभी लोग, यू ऑल आर देयर, यू ऑल आर फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो आईआईटी जेई हो, नीट हो, या आईएएस, आईपीएस, बैंक पीओ, जितना है, सपने बिकते हैं, वहां भी सपनों को बेचा जाता है, राइट। आपका सपना होता है एन आईएएस ऑफिसर, दैट ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर, उसके लिए पूरा बाजार है, कंप्लीट मार्केट। मुखर्जी नगर से लेकर ओल्ड राजेंद्र नगर से लेकर अशोक नगर इन हैदराबाद से लेकर चंद्रा लेआउट से विजयनगर बैंगलोर से लेकर है ना अलीगंज लखनऊ से लेकर प्रयागराज इलाहाबाद से लेकर पटना बोरिंग रोड से लेकर आप कोटा, अलग अलग जगह पे जो सपनों का बाजार है, कोचिंग इंडस्ट्री throughout the country, the market, and again that is all market of dreams, सपने का है। आते हैं सभी लोग, है ना, आईएएस बनने का सपना जो होता है, and that's where the things are there. Economy today is based on dreams right, एक सपना ये भी है, ये भी एक सपना है। स्पेस टूरिज्म एंड अंतरिक्ष, ये भी इंसान का सपना है, और ये भी एक बाजार है। दिस ऑल्सो मार्केट, स्पेस मार्केट। और एलोन मस्क, रिचर्ड ब्रांसन और जितने भी ऐसे एंटरप्रेन्योर को उसको पता है ये एक सपना है, और इस सपने को हकीकत में बदलने में बाजार है, और उस बाजार इतना गर्म होगा भविष्य में कि आज वो इसमें पैसा लगाएंगे तो उसका 10 गुना से लेकर 20 गुना से लेकर 100 गुना आने वाले टाइम में कमाएंगे वो, इसीलिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर इन्वेस्टिंग बिकॉज ऑफ दिस, राइट। सो मेरे प्यारे बच्चों, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी again is a part of daily lives, whatever we do in our human lives. Science and technology help meet our needs, our demand, whether it's the food or water or energy or transport, you take any kind of thing there, सबके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये भी देखता है कि भविष्य क्या होगा, where the man will be leading to that, क्या वहां उस समय जरूरत होगी, डिमांड होगा, उसको भी देखा जाता है, राइट। सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रंटियर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी दिस स्पेस एलिवेटर, स्पेस लिफ्ट, लिफ्ट करा दे। इमेजिन that wonder,
that miracle and that experience of going in the outer space in a space elevator, right? That will be a big market in future. ये जब भी होगा, आज से 20 साल के बाद, आज से 50 साल के बाद, या तो हम लोग जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे, ये चीज देखेंगे, या हमारे आने वाली पीढ़ी देखेंगे, हमारे बच्चे जो संतान होंगे वो ये चीज करेंगे, और ये होगा. टेक्नोलॉजी ऑलवेज डिसरप्ट द ओल्ड टेक्नोलॉजी. नई टेक्नोलॉजी जो है पुरानी टेक्नोलॉजी को खत्म कर देता है. जो चीज हमें अकल्पनीय लगती है, अनइमेजिनेबल लगता है, वही जाके भविष्य में हकीकत बनता है. आज हमारे लिए बहुत ही है ना अनइमेजिनेबल है, बट दिस इज गोइंग टू बी रियलिटी इन कमिंग टाइम्स. तो उस समय हमें नॉर्मल लगेगा. जैसे आज हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, कार यूज करते हैं, कई चीजों को यूज करते हैं, हमें नॉर्मल लगता है. बट वही चीज 100 साल पहले, 50 साल पहले वही था, अकल्पनीय था, अनइमेजिनेबल था. Man, the modern man, and this brain, and the way we are thinking, we're developing, and the way we are going it, man can surpass anything. That's why we are the strongest species of this earth. इसीलिए मनुष्य, मानव सबसे अधिक शक्तिशाली प्रजाति है इस पृथ्वी का, जो हर चीज को हम कर सकते हैं, हर चीज को मुमकिन करते हैं. सेटबैक्स, फेलियर्स, बट वी सक्सीड, वो चीज है. स्पेस टेक्नोलॉजी में भी कई फेलियर्स हुए. एलोन मस्क बर्बाद हो गया था. एलोन मस्क बर्बाद हो चुका था, कंगाल हो गया था. कंगाल एलोन मस्क जो है कंगाल हो चुका था. अपने स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्स के लिए एलोन मस्क ने इतने पैसे लगाए एक रॉकेट बनाने के लिए. फाल्कन 9 रॉकेट फेल हो गया था. पहला रॉकेट फाल्कन 9 फायर, डिस्ट्रॉयड, खत्म. आग लगने के बाद खत्म हो गया. मतलब लॉन्च पैड में हुआ कि नहीं विस्फोट, खत्म हो गया. और एक विस्फोट, एक रॉकेट अगर करोड़ों रुपए का बनता है और वो मान लो कि सफल नहीं होता है, लॉन्च होते ही लिफ्ट ऑफ होने के साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाए, आप सोचो जितना पैसा लगाया गया है सब पानी की तरह बह जाता है. एलोन मस्क जो है कंगाल होने वाला था, बैंकक्रप्ट, लेकिन उसने छोड़ा नहीं. He didn't give up. He went again with Falcon 9 Heavy, and ultimately he succeeded. एलोन मस्क के बारे में कोई कुछ भी बोले कि वो ऐसा है वैसा है, जो भी है, but I salute that man. I am a science tech teacher. I'll salute that man. I will definitely salute that man. I respect Elon Musk. मेरे मन में एलोन मस्क का रेस्पेक्ट है. हर इंसान कोई भी सही नहीं होता है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है. एलोन मस्क के बारे में कोई भी कितने भी चीजें मीडिया में बोला जाए, कहीं भी करना हो, लेकिन उस आदमी का आप जज्बा देखो. बर्बाद होने के बावजूद भी उसने गिव अप नहीं किया. He didn't give up. He went up. और आज एलोन मस्क की कंपनी SpaceX has built up the Falcon. Falcon 9 is ready. क्या है Falcon 9? What is Falcon 9? Falcon 9 is a space rocket which can carry human to outer space, bring them back. क्या है Falcon 9 heavy rocket? SpaceX का ऐसा रॉकेट है जो RLV है, reusable launch vehicle है, जो कि इंसान को, एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में ले जा सकता है और उसको वापस सेफली ला सकता है. एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बाकी जितने भी स्पेस एजेंसी है, नासा, ESA, चाइना, CSA, इंडिया, जितने भी स्पेस एजेंसी है, बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी है. इट्स अ वेरी वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी. Falcon 9 it goes just like this and it comes like this. यानी कि उसके जो इंजन होते हैं, रॉकेट इंजन होते हैं, पहला जो रॉकेट इंजन होता है अर्थ के ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जाता है. अब
It goes just in the outer space, straight, vertical, from the launch pad. And then it has there's a thruster which take it upward, जो उसकी इंजन थ्रस्टर उसको ऊपर कर देता है. और फिर जब उसे वापस आना होता है तो उसके जो थ्रस्टर्स हैं, इंजन्स, बैकवर्ड, पीछे की ओर थ्रस्ट लगाता है और वो वर्टिकली सीधा नीचे उतरता है. इसको कहते हैं इनोवेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी. क्यों कर रहा है एलोन मस्क? क्यों पैसे लगा रहा है एलोन मस्क? क्योंकि उसे पता है कि भविष्य में यह बहुत बड़ी चीज होने वाली है. एलोन मस्क को पता है कि स्पेस एक्स बहुत पैसे कमाएगा. लॉट ऑफ मनी स्पेस एक्स विल अर्न, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स that will be earned by SpaceX. Now another thing here, this one, space elevator. इस पे भी काफी रिसर्च एंड काफी सारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सारी चीज चल रही है, जो कि इस तरह का एलिवेटर बनाएगा जो कि इंसान को सीधा अंतरिक्ष तक पहुंचा के वापस एलिवेटर नीचे जमीन पे आएगा. इस पे जो भी खर्च होगा, और ये आसान नहीं है, आसान नहीं है. It's a technologically very complex and challenging. But when the scientists, engineers will be able to develop this space elevator, right, we can go up and come back. This is going to be the future. अब मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको ये चीज दिखाता हूं. Look at this diagram. This is where they will build the kind of a hard structure. जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं ना, मकान. आपको पता है बुर्ज खलीफा? बुर्ज खलीफा पता है? टॉल बिल्डिंग्स, उससे भी ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बने. तो दिस मेड ऑफ वेरी स्टील स्ट्रक्चर विल बी रेज्ड विद द काइंड ऑफ दिस पार्ट. ये हैबिटेबल होगा. It will be habitable, जहां इंसान रह सकते हैं, और अर्थ के रोटेशन के साथ साथ वो घूमता रहेगा. It will just go round. Now if you see here this one, this is anchored, है ना, इक्वेटर पे एंकर्ड होगा. कहां पर होगा? It will be anchored in equator. इक्वेटर पे यहां पे इसको एंकर किया जाएगा. ये क्लाइंबर होंगे, केबल होगा. दिस इज द लिफ्ट. ये लिफ्ट है. इमेजिन अर्थ का जो इक्वेटर है वहां से दैट केबल, जैसे रोपवे होता है ना, रोपवे, दैट विल बी एंकर्ड हियर. और ये रोटेट विद अर्थ रिमेन वर्टिकल. मतलब अर्थ के इक्वेटर के पास किया जाएगा. अर्थ के रोटेशन होने के बावजूद भी इस पे असर नहीं होगा. इमेजिन करो, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, will not have that impact on this cable. On the equator it will be raised there. And now you see here geostationary orbit. Now tell me, how far is geostationary orbit? जब अर्थ रोटेट करेगा, ये इक्वेटर से इस तरह से बनाया जाएगा, इवन अर्थ के रोटेशन के साथ साथ में ये फिक्स रहेगा, वर्टिकल रहेगा, ये मूव नहीं करेगा. और कितने में होता है ये geostationary orbit? You have read in the science and technology, space technology class there. You are aware of this. 35,784 kilometers. That means around 36,000 kilometers above the surface of the earth. पृथ्वी के सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर, जहां पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं. कौन सा सैटेलाइट होता है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट. टुडे इन इंडिया यूज GSAT. That kind of area it will be there. इमेजिन करो आप, इतना ऊंचाई पे बनाया जाएगा जहां नॉर्मल कम्युनिकेशन सैटेलाइट रिमेन्स स्टेशनरी रहेगा. जैसे कि सैटेलाइट रिमेन्स स्टेशनरी, यू नो दैट. क्या होता है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट? व्हाट इज जियोस्टेशनरी ऑर्बिट? वेयर द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ is on equatorial plane, equatorial plane,
And what is geostationary satellite, communication satellite? It remain fixed with the ground. जो दूर संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए जो स्टेशनरी भू स्थिर जो उपग्रह हम बनाते हैं, कहाँ होता है? इक्वेटोरियल ऑर्बिट होता है, 36,000 किलोमीटर दूरी होती है, सर्कुलर होता है, और सैटेलाइट को ऐसा रखा जाता है कि वो किसी जगह से, पृथ्वी के, हमेशा वो आसमान में एक जगह पर दिखाई देता है, relatively remains fixed or fixed with earth rotation there. Same, this cable will be there. You can see here, even it will be higher than that, above the geostationary orbit, उससे भी ऊंचाई पे होगा काउंटरवेट। और वहां पर ये जो लिफ्ट है, दिस लिफ्ट, आई विल चेंज द कलर, ये जो लिफ्ट है ये जाएगा यहां पर, केबल पे ऐसा जाएगा, तो ये ऊपर ऐसा जाएगा, जस्ट लाइक कि बिल्डिंग के जो लिफ्ट होते हैं, और ऐसा नीचे आएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, कि जैसे जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का होता है वैसे ही रखा जाएगा। अनइमेजिनेबल, अकाल्पनिक लेकिन आने वाले समय में हकीकत होगी, वास्तविकता होगी, ये होने वाला है स्पेस में, राइट? दिस इज गोइंग टू बी देयर, राइट? सो ये चीज को ध्यान रखना है, दिस पार्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर आर द फ्रंटियर व्हिच इज गोइंग टू हैपन। ये दूसरा जो फ्रंटियर है जो कि अंतरिक्ष के फील्ड में होने जा रहा है। What you can see here, this cable, ठीक है? और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये नाम आता है स्टारशिप। What you see here, starship, which will carry humans. You see here, there will be booster. ये booster है ना? ये booster है. What you see here, there is a booster. और ये स्टारशिप है, इसमें जो है, इसमें ह्यूमन एस्ट्रोनॉट होंगे। इवन ह्यूमंस कैन बी कैरिड। इसका नाम 24 रखा गया है, शिप 24। 24 पर्सन्स इसमें रह सकता है, और एक बनाया गया शिप 25 पर्सन्स हो सकता है। बूस्टर ले जाएगा, जैसे फाल्कन के बारे में मैंने बताया, तो यहां पर ये चीज है, लिफ्ट ऑफ, इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट 1, लिफ्ट ऑफ करने के बाद इंजन फायर करेगा, ये ऊपर असेंड करेगा, फ्लाइट टर्मिनेट होगा, ठीक है? फिर यहां पर वापस लॉन्च पैड डिस्टेंस, फिर इंटीग्रेटेड टेस्ट फ्लाइट क्या होगा, मोर एक्सप्लोसिव्स होंगे, हॉट स्टेजिंग रिंग होगा, इलेक्ट्रॉनिक थ्रस्ट होंगे, और वापस आ जाएगा। तो आप समझो कि ये चीज जो है विच गोज अप, ये बूस्टर उसको ऊपर ले जाएगा, और वही बूस्टर उसको वापस लाएगा। इसका बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, ये चीज है फाल्कन 9 हेवी, स्पेसएक्स, राइट? स्पेसएक्स कंपनी जो है, that is going to be a reality, another frontier thing here, right? Science and technology में अगर देखा जाए, there are a lot of areas are there. If I have to teach you science and technology topics, I will require hundreds of hours to teach you. मेरे लिए 100 घंटे भी कम पड़ जाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको पढ़ाने में, ठीक है? और मैं वैसे टॉपिक्स को हमेशा ध्यान रखता हूं जो कि प्रोबेबली यूपीएससी में आ सकता है, उस पार्ट को ध्यान रखते हुए, राइट? और ये सारे ऐसे चीजें जो नए डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें जो है मैंने बताया भी था, आई हैव गिवन इन माय बुक, दिस इज माय बुक हियर, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बाइबल है, कुरान है, गीता है। जो मैं पढ़ाता हूं, जो मेरी सोच होती है एग्जाम को ध्यान रखते हुए, ये सब है इसमें, प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम टुगेदर। It target both the exam, prelims and mains exam, and again this all kind of latest development
advanced technologies. I have already given the book. There are many other topics, right, where UPSC can ask question, and the future technology is given in this book. Is the third edition, right? My science and technology book, science and technology inception, from inception to advancement. Oak Bridge publication. Third updated edition is available there. हर साल इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस में, और इस बार भी आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस रहेगा. आई एम वेरी श्योर दैट देयर विल बी क्वेश्चंस इन द कमिंग एग्जाम फ्रॉम हियर. वही मुझे लगता है ना, जिस द वे द प्रिपरेशन गोज इनटू, तो इसको भूलना नहीं, क्योंकि आज सी 5 क्लासेस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, राइट. एक चीज मैंने ये भी बताया था, दिशा पब्लिकेशन 360 degree approach to agriculture. Now 3 to 4 questions are being asked, and again please don't forget my 4th edition environment book. मेरा चौथा एडिशन का environment book मार्केट में आ चुका है, Amazon, Flipkart सब में है, और मैंने टेलीग्राम में इसका QR कोड और लिंक भी मैंने दिया था, है ना, जहां पर मैंने इसके सोर्स वगैरह दिए हुए हैं. तो उसमें 40% डिस्काउंट में ये environment book, अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो यू विल गेट दैट देयर, है ना, वहां पे अवेलेबल है वहां पर. दैट इज दिस वन. मैं इसको शेयर कर देता हूँ, सो यू कैन, इसका जो पार्ट है, लेट मी जस्ट टेल यू हियर. ये मैंने अभी जो है जस्ट I'm just sharing here ये चीज. इसका लिंक है, आप डायरेक्ट लिंक पे जा सकते हो. जो मेरे इन्वायरमेंट का बुक जो है उसका लिंक ये है, http this one bit.ly all small /N ebook environment ecology book all in capital. This is the link, and you can use the coupon code. You can use the coupon code NN capital N offer OFFER, ठीक है, 05. You are getting 35% discount. Additionally, you will get 5% more. So 40% discount that will be available for this one, for my latest environment book. ये मल्टी कलर बुक है और इसमें कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें मैंने करंट एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट जितने भी लेटेस्ट चीजें उसमें मैंने ऐड किया है. अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग एग्जाम, ठीक है. और एक चीज याद रखना है, अभी इकरा आईएएस के प्लेटफॉर्म में मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेशंस लिए हैं. ऑल दिस 5 सेशंस जो ये लाइव देख रहे हैं प्लस दोज वर रिकॉर्डेड वीडियोस, तो वहां पर आप जब जाएंगे तो उसके जब रिकॉर्डेड वीडियो, तो ये 5 सेशंस करंट साइंस टेक को ध्यान में रखते किया गया है. एट द सेम टाइम आई विल बी कमिंग टू कानपुर फॉर द ऑफलाइन बैच, एंड एट द सेम टाइम पुणे फॉर द ऑफलाइन बैच फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दोनों मैं आने वाला हूँ कानपुर और पुणे में, तो वहां पे मैं पढ़ाऊंगा मैं चीजें. तो वहां हम लोग साइंस टेक में और भी बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे. तो मैं यहाँ से जो भी डिस्कस जो भी कर रहा हूँ मैं, तो आई रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स ऑफ IQRA IAS who are going to attend my classes in Kanpur and Pune in coming months and coming next month जो है, please buy this. ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक वो काकादेव में अवेलेबल है. काकादेव में जाएंगे, वहां पर जो बुक सेलर जो मीन्स वहां पे ये बुक अवेलेबल है. इन पुणे ऑल्सो यूल गेट इट, और यू बाय द ऑनलाइन देयर यूल गेट दैट, बट दिस इज फॉर इन्वायरमेंट बुक, ठीक है. आप ओक ब्रिज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो है, दिस फॉर इन्वायरमेंट, this environment book that is by GKP Access, ना, ये GKP Access पब्लिकेशन का है, जहां पर उन्होंने ये दिया है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक. एंड मेक श्योर कि ये 4th एडिशन, ये जो है 3rd अपडेटेड एडिशन जो मैंने भी बुक का कवर दिखाया है यहाँ पर. तो ये जो है आपको ओक ब्रिज पब्लिकेशन के वेबसाइट में आप जाएंगे तो वहां भी आपको डायरेक्ट डिस्काउंट भी मिल जाएगा.
वहां भी मिल जाएगा, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट में। और जो एग्रीकल्चर फॉर जीएस जो है, अगेन रिमेंबर दैट दिस एग्रीकल्चर इज बेस्ड फॉर जीएस, जो जनरल स्टडीज में ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस टेक, जो जहां पर एग्रीकल्चर के एरियाज रहते हैं उसको कवर किया गया है। दिस फ्रॉम दिशा पब्लिकेशन। इवन इफ यू गो टू दिशा पब्लिकेशन वेबसाइट, तो वहां भी आपको ये बुक और उस पर डिस्काउंट अवेलेबल है। इसका नाम है 360 डिग्री अप्रोच टू एग्रीकल्चर। ये मैं लास्ट क्लास में इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि व्हेन पीपल विल सी दिस रिकॉर्डेड वीडियो एंड आल्सो थिंग, दे कैन डेफिनेटली गो एंड कैन ऑर्डर दैट वन। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत करते हैं, कितना पढ़ाई करते हैं और कितने आप बुक के वहां पे करना चाह रहे हैं। ठीक है, शॉर्टकट ठीक है, लेकिन सब जगह शॉर्टकट काम नहीं करते। You have to go to some standard books, right? So Vikas Dubey is saying that sir science and technology का book name क्या है? I'll write it down here. Science and technology का जो book है इसका नाम ये है, ये सब उसमें it is all authored by me, आपको मेरा नाम मिल जाएगा। बुक का नाम ये है फ्रॉम इंसेप्शन टू एडवांसमेंट, this by Oakbridge publication. The name of the book is Science and Technology from Inception to Advancement, Oakbridge publication, right? If you go to directly, you can get it there. Okay? This is what Vikas has asked there. कल नहीं, वहां पर नहीं है। All in one is asking, no, that you will be informed in the group, है ना? In the group you'll get to know my marathon session, वो मैं वहाँ inform में कर दूंगा मैं। ठीक है, okay, something let me see your chat box here. Thank you Manish for your praise. धन्यवाद मेरे सिंगिंग की तारीफ करने का। मैं गाता हूँ, ऐसा नहीं है, आई एम देयर, ये मैं जग जाहिर नहीं करता, बट अगेन आज ऐसा था मौका, आई sang few lines। ठीक है, 1990 में एलोन मस्क कार कार्टेज में काम करता था, यस वेरी राइट, कार गैरेज में काम करता था, यस, मोहम्मद तारिफ हुसैन कार गैरेज में काम करता था। बुक प्राइस जो है वो डिस्काउंट पर मिल जाएगा, लाइक यहाँ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है प्रिंटेड प्राइस 595 इज गिवन, बट डिस्काउंट विल बी देयर। एग्रीकल्चर बुक इज 350 रुपीज, दिशा पब्लिकेशन, एंड द इन्वायरमेंट बुक दैट इज समथिंग अराउंड अगेन 595, बट विद डिस्काउंट इज अवेलेबल 300, अराउंड 300 इज अवेलेबल, डिस्काउंट के साथ अराउंड 300 के आसपास। और आपको जो मेरा एग्रीकल्चर वाला बुक है फॉर जनरल स्टडीज, दैट विल, उसका एमआरपी 350 है, बट यू विल गेट इवन लेस देन दैट, विद डिस्काउंट यू विल कम इन 200 अराउंड देयर। साइंस टेक एनवायरमेंट का 595 है, दैट विल विद डिस्काउंट विल कम टू अराउंड 400 और समथिंग ऑफ दैट, है ना, तो वो मिल जाएगा वहाँ, वो चीज़ है। तो वो मेरे चैनल में मैं बताऊंगा मैराथन के लिए, दैट आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट वीक, अभी नहीं, वो नेक्स्ट वीक में सारा होगा उसमें, और वो मैं चैनल में, टेलीग्राम चैनल में आई विल इन्फॉर्म देयर ऑफ द पार्ट ऑफ दिस, राइट? सो आई होप दैट दिस ऑल हेल्प्स। इकरा आईएएस की जो पहल है 5 दिन का साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास रियली हेल्प्स यू फॉर दैट, राइट? सो मैं आई विश यू ऑल द बेस्ट हियर, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम्स, राइट? पर्टिकुलरली अभी जो जेपीएससी का ही परीक्षा होने वाला है, दोज हु वांट टू गिव गोइंग फॉर जेपीएससी एग्जाम, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन प्रीलिम्स एग्जाम, सो दिस IQRA IAS प्लेटफॉर्म व्हाट आई हैव नाउ कवर्ड, और जितने चीजें तो आप कर सकते हो। बाकी लोग आप मुझसे सोशल मीडिया में जुड़े रहिए, है ना, मेरा इंस्टाग्राम का पेज है नीरज नचिकेता के नाम पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल इज देयर, कई लोग आप जुड़े हुए भी है, बट अदर्स हु वांट टू फॉलो मी, यू कैन फॉलो मी देयर in my Instagram page, and then the Telegram and other areas you can follow me, right? और जो चैनल है वहाँ मिल जाएगा। तो I tried my level best कि जितना मैक्सिमम हो सकता है to cover this 5 days classes there, right? तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये बेनिफिशियल रहा होगा, ठीक है? तो मैं अलविदा लेना चाहूँगा, लेकिन फिर वो कहते हैं कभी अलविदा ना कहना, I will be back again, right? I will be back with other session elsewhere, वो चीज़ है। So thank you everyone.
and we will meet soon, है ना? Good night. Thank you. Take care. Bye bye. Thank you.